हेलो गाइस। वेलकम टू मंडे हॉट बॉक्स। इंडिया में तो छुट्टी शुरू है, आज बैंक हॉलीडे है। दक्ष, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर, पर Hmm. बहुत कुछ हुआ यार। सैटरडे संडे जो कुछ हुआ है लीग में, आई थिंक ऑल ऑफ अस नीडेड दिस ब्रेक मेंटली, एज पर्सनल, एज फैंस आल्सो पर्सनली। 2 दिन में मैं बहुत लाइव्स पे गया हूँ, बहुत जगह पे ये Hmm. टॉटनहम लिवरपूल का गेम हमने डिस्कस ओ किया है, तो भाई बहुत ज्यादा हुआ होगा। आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि आलोक को तो मतलब संबित पात्रा की तरह हर जगह बुला रहे होंगे, है ना, कि लाइक आलोक सर आ जाइए, थोड़े से टिप्पणी दे दीजिए। यस, क्योंकि उस दिन इमीडिएटली रात को आई हैड जॉइंड निधिज लाइव, आई नो। निधिज लाइव। देन आफ्टर दैट आई जॉइंड यस्टरडे, आई वाज विद दिव्यांश। तो आई दिव्यांश के सॉ। साथ एक बार और जहाँ पे मैं और निधि दोनों थे दिव्यांश के स्ट्रीम पे। तो फिलहाल तो ये शुरू है, बट यस, बिफोर वी स्टार्ट गेट इनटू दैट, फर्स्टली दक्ष, ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस ऑन 10,000 सब्सक्राइबर्स। फर्स्ट माइलस्टोन, ऑफ कोर्स, लॉन्ग वे टू गो। एक साल एंड कुछ एक महीना आई थिंक हुआ रहेगा चैनल स्टार्ट समथिंग लाइक करके। दैट, समथिंग या, लाइक दैट, या। and 10,000 subscribers already. So congratulations for that, firstly. And small steps for Southstand View, 1,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो यस, 2-3 दिन में कल कल का मेरा ऑफ कोर्स लिवरपूल का जो गेम था, वो ब्रेकडाउन का जो वीडियो था, आफ्टर दैट गॉट क्वाइट अ फ्यू सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग ऑन दिस जर्नी। करते रहेंगे कुछ ना कुछ साथ में। सो यस, जो जितने भी लोग अभी आए हैं, विल जस्ट बिफोर वी गेट इनटू दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू साउथ स्टैंड व्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू ए फॉर आर्सेनल, लाइक करिए स्ट्रीम को, एंड स्ट्रीम खत्म होने के बाद प्लीज कमेंट ऑन द स्ट्रीम सो दैट इट helps with the algorithm, right? So yes, man, before we actually get into uh, discussing the game, right? Your thoughts on Liverpool versus Tottenham, man? I mean, of course, the debacle या। was one of the worst games that we have seen, as when we talk about refereeing decisions. But your two thoughts on that, man? यार देख, सबसे पहले तो ना, आई अंडरस्टैंड रेफरिंग पे इज द बिगेस्ट फोकस, इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज यार एक तो अच्छा गेम था, वो सॉर्ट ऑफ रूइन हो गया। बट ऑल्सो फॉर मी, जो इस गेम से जो टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए थे, द गुड थिंग्स दैट हैपेंड इन दिस गेम, फ्रॉम हाउ क्लॉप मैनेज्ड 2 रेड कार्ड्स में फिर भी होल्डिंग ऑन टिल द एंड, what Ange really did to manage his attack against Liverpool, good performances from Spurs as well. मतलब ये सारे जो टॉकिंग पॉइंट्स है सारे साइडलाइन हो गए। लाइक अनलेस यू आर अ स्पर्स चैनल जिसने बात करी हो कि ये प्लेयर अच्छा था, वो प्लेयर अच्छा था, व्हाट इज एवरीवन्स टॉकिंग पॉइंट? VAR, रेफरी, करप्शन, ये सब, राइट? एंड इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वंस आई मेड माई वीडियो, I also realized कि मैंने तो गेम पे बात ही नहीं करी है। I mean, I've hardly talked about the game. I've spoken about the referee. I've spoken about this. I've spoken about that. But the thoughts I had about the game, कि लिवरपूल जब 11v11 था, it was a big challenge for Spurs. Spurs ने फिर भी मैनेज किया। विकारियो इतना इतना बढ़िया कीपर निकल रहा है, right? I wanted to talk about Vicario. I wanted to talk about Porro. I wanted to talk about Udogie. I wanted to talk about Madison. बट इस सब क्लाइमेट में मुझे लग रहा था, मैं लाइव आके अगर मैंने उस गेम पर ब्रेक डाउन भी किया ना, एवरी वंस गोना बी दक्ष भाई वार है, ये इसलिए हो गया, 10v11 था इसलिए ऐसे हो गया, 9v11 था इसलिए ऐसे हो गया। And I was like, what's really the point? And that's the whole disappointing thing about me, that the good things that Liverpool did, that the good things that Spurs did in this game, from a footballing perspective, ना, ये सारा sideline हो गया। And all we're talking about now is VAR, VAR, VAR. From an outside perspective, I think it was a great game. जितना हाइप हो रहा था इस गेम का, उतना आई थिंक इट लिव्ड अप टू इट इन टर्म्स ऑफ ड्रामा फॉर श्योर, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग ऑल्सो इट लिव्ड अप टू इट। आई थिंक लिवरपूल वर सुपर रिलेंटलेस। आई थिंक उन्होंने स्पर्स को बिल्डअप में काफ़ी हर्ट किया, एटलीस्ट इतना स्मूथली मेरे को लग नहीं रहा था जितना बिल्डअप हुआ था। बट ऑल्सो आई थिंक मैडिसन, बिसूमा, I would even say Sar, not Sar as much, but maybe Bissouma and Madison for me were the standout performers, and of course Son to Son है ही है। I think these two were the standout performers for Spurs, जो उन्होंने बहुत अच्छा करा था। But I will still say that I think Liverpool ने जो हार्ट दिखाया ना, that day Liverpool ने sort of दिल जीत लिया मेरा, because I was like, that is a very brave performance from a squad जो
दो सस्पेंशंस में हो गए, दो रेड कार्ड्स हो गए, एंड यूजुअली व्हेन अ टीम गोज 9 men डाउन, आई अंडरस्टैंड देयर इज दिस नैरेटिव कि यार ठीक है, 9 men के अगेंस्ट खेलना बड़ा मुश्किल होता है, बट यू डू हैव अ 2 man एडवांटेज, एटलीस्ट अ 1 man एडवांटेज इन मिडफील्ड, राइट? या मिडफील्ड क्या, पूरे फील्ड पे। सो आई थॉट यार जो क्लॉप ने एडजस्टमेंट्स करी थी, ब्रिंगिंग इन 3 टॉल सेंटर बैक्स, नोइंग कि अब हम बॉक्स के अंदर रहेंगे एंड स्पर्स को विल फोर्स देम टू ट्राई एंड ब्रेक आर लो ब्लॉक बाय क्रॉसिंग इन, बाय ट्राइंग टू गेट इन बिहाइंड अस एंड एवरीथिंग, वो अलाउ नहीं करना। एंड एवरी टाइम वो एक क्रॉस जाता था, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अभी कोनाटे या वैन डाइक या गोमेज या किसी ना किसी के सर पे बॉल पड़ने वाली है। सो आई थिंक क्लॉप ऑल्सो डिड रियली वेल। एंड आई थिंक जैसे वो होता है यार, जब यूनाइटेड के अगेंस्ट कि जॉनी एवंस एंड मगवायर आ गए थे, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑपोजिशंस वीकनेस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट स्पर्स डिड। 9 लोग थे, कहीं ना कहीं से तो एडवांटेज निकलना ही था, एंड उन्होंने वहीं पे एडवांटेज, अपना मैन एडवांटेज काउंट करके वो ओन गोल से गेम जीत लिया। Yeah. नाउ अपार्ट from the game, if we have to talk about VAR, I will say stop talking about it because कुछ नहीं होने वाला. I've heard about shouts about replay करो. They've been games with bigger impacts than this game that have not, जिसमें तो इतनी शोर भी नहीं हुआ था. The Yep. most important being Sheffield versus Aston Villa, Sheffield versus Aston Villa. जिसमें Yes. गोल लाइन टेक्नोलॉजी फेल होगी. अब तो वीआर छोड़ दो, गोल लाइन टेक्नोलॉजी फेल होगी बॉयज, और उसमें एक टीम रेलेगेट हो गई, दूसरी टीम ऊपर रही, ठीक है, और उसकी वजह से उनका बिल्डअप हो गया, ग्रीलिश बिक गया 100 मिलियन में, ये डोमिनो इफेक्ट हुआ, राइट? देयर सो मेनी थिंग्स, मतलब I'm not saying that Liverpool fans are not entitled to have a little bit of anger towards what has happened. Of course, everyone does. जब वो यूनाइटेड के अगेंस्ट गेम में आर्सेनल वाला मिलीमीटर से ऑफसाइड हो गया, तो उसका शोर अभी तक चल रहा है। जब लास्ट सीजन हमारे गेम में ब्रेंटफोर्ड के लिए लाइंस बनाना छोड़ दिया था और हम गेम जीत जाते, I mean, sure, we are angry at that, but nothing's going to happen. I will say stop talking about VAR. This idea कि आप referees बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, I think it's a little stupid. Because there's not like एक pool of referees नहीं है जहाँ से तुम उठा के इन referees को ला रहे हो. These are genuinely the best referees that the English Premier League can have. Yeah. अगर मैं यहाँ पे आयरलैंड की लीग ऑफ आयरलैंड गेम्स देखता हूँ बॉयज, ट्रस्ट मी, ये रेफरीज जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के रेफरीज हैं, दे आर माइल्स अहेड ऑफ एनी अदर कंट्रीज रेफरीज. यहाँ पे तो इतने गंदे डिसीजन होते हैं, यहाँ पे तो चलो वीआर भी नहीं है, बट इतने टेरेबल डिसीजन होते हैं यहाँ पे. So yeah, unless your idea is to import referees from around the world and bring them to the league, I don't think anything like that's going to happen. And yeah, you have to train them better, you have to make things better. But yeah, but back again to the football, I will say there are some points जो मैंने pick up किए that I think Spurs have to address. Number one, I think there are some chokeholds in the Spurs build-up that if you shut down very effectively, you can cause them a lot of trouble. I think अभी build-up के लिए there are a few players that are involved. उसमें आपके wing backs आते हैं, उसमें आपका बिसूमा आता है. I think if a team goes very high press, it's a high risk strategy. But if you stop these guys from getting the space they want to distribute, जैसे बिसूमा is incredibly press resistant, but if you shut him off with, I don't know, maybe two people, maybe you make the wing backs play a long ball or something. I think Spurs struggle with that. I think Spurs struggle against a low block very heavily. I think you rely on Madison's brilliance to break those low blocks as well. And the biggest thing I've taken away from this is that if you hang on with Spurs, अगर आप 70 मिनट तक स्पर्स के साथ खेल लोगे, their team does not have the stamina to continue this for 90 minutes. Son will come off, Madison will get less effective, Bissouma will get less effective, their wingbacks will get less effective. You might just not have to beat Spurs in the first 10, 15, 30 minutes. अगर आपने Spurs को 70 मिनट तक होल्ड कर लिया, and Son has to come off, that is one of the most clinical strikers, ठीक है? अगर आपने Spurs को frustrate करके you start finding holes in their defense, just hang on with Spurs. I think that could be an avenue that you can use to exploit Spurs की weakness. But yeah, apart from that, great game of football. Drama तो बहुत ज़्यादा था ही. Commiserations to Liverpool fans. Yes, VAR needs to improve, but there is no tangible solutions. Any solution that people point out, उसके अंदर मेरे हिसाब से
सबसे बड़ा इशू ये निकलेगा कि हमेशा उसके अंदर होल्स होंगे. सो पीपल से लॉट ऑफ थिंग्स, वार को हटाओ. अनलेस आपका पॉइंट है पूरा हटाना वार को, मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. बस माइक अप कर दो, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ. या या वेरी वेल पुट एक्चुअली दक्ष, क्योंकि मैंने जो कल मेरा वीडियो किया है टू ब्रेक डाउन दिस गेम, आई स्पोक अबाउट दिस एग्जैक्ट सेम थिंग्स देयर कि फर्स्टली like my thoughts about VAR and whatever happened was that okay, like all Spurs fan, like everyone knows that that goal should have stood. Okay, no one's denying that. Second thing is अगर ऐसे mistakes होते हैं, referees should be held accountable, and there should be some repercussions to this, right? And my problem here is that it's not that it today it happened in favor of us, so I'm enjoying, but Yeah. exactly next week it will definitely happen Could go against you against us. also. Yeah, of course. And then we'd be crying out loud के यार ये हमें कैसा हो गया, and then Liverpool fans would be laughing के हे हम लोग ने last week आपको बताया था आपने वो किया नहीं, This हम is अभी karma. आप This is karma. yeah exactly. So today when exactly last, I mean yesterday also when we were on the stream or on Twitter, you could see that a lot of Tottenham fans also are like today tagging Liverpool fans saying ke what about the last year's red card that Jota should have received. हाँ, And मतलब the problem it's here just is you that can if we go get back into what to about time immemorial. आप yeah खत्म if ही we नहीं होगा get ये into कभी. what aboutry, uh this is going to get worse, right? The only solution is that all clubs, all fans should stand together in these cases, irrespective of whether it happens for us or against us, and they should talk out. I mean, they should just point this out. VAR, I mean, FA should be held accountable. PGMOL should be held accountable, and there should be some reforms in terms of Yeah. the referees, right? Now, like you rightly said, can you remove VAR? No, because it's just gonna make things worse. Yeah. We would go back to the times when we just relied on the subjectivity of the on-field referees, and they are more bound to make bound to make more mistakes. So the only, and of course, like you said, these are actually the best of the lot of the referees that we actually have in the country right now. So removing them, bringing some new faces there, I don't think that's also an option. The best way is, of course, letting us know what's actually the conversation that is happening between the VAR official and the on-field referee. And it's Yeah. such a rookie mistake that the VAR referee thought that the on-field call was onside and goal, Yeah. Yeah. and he just gives check complete and go ahead with the on-field call. Why couldn't you say that okay, check complete and it's a goal? Yeah, it's just one of those moments कि अगर वो बोल देता, if his choice of words was different, we are looking at a different outcome. Yes, And yeah, yes, it's a very amateur mistake at the highest level. And but वही है ना, I think this is like the easiest case you can take and beat VAR with a stick. This is cause yeah, this is at the point this is the worst implementation of VAR. ठीक yeah, है. Here is my thing though. ठीक है, when people say let's talk about VAR in general, not just this last game, let's talk about yeah, VAR in general. When we say repercussions to the referee, ठीक है, क्या repercussion करने हैं? मतलब unless तुम उनको नंगा करके स्ट्रीट पे पीटना चाहते हो, क्या repercussion है? What you want to yeah. drop them? Like I said, कौन सा They've been doing magical, it for a while. Yeah, against in our North London derby, the guy who was refereeing was a first time referee. So you can see yeah, there is not a मतलब plethora of referees कि आप आके उठाओ, चलो इसको फेंक के उसको उठा लो. There are probably 12-15 टॉप लेवल रेफरीज जो सिर्फ प्रीमियर लीग में नहीं, चैंपियनशिप में भी जाते हैं लोग, जब स्पेशली जब प्ले ऑफ होते हैं. ये सारे आपके क्या नाम है इसका, अब तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा, एटकिंसन एंड एंथनी टेलर, दीज गाइज गो टू द चैंपियनशिप प्ले ऑफ्स एज वेल बिकॉज दैट्स yeah, द लेवल इट्स रिक्वायर्ड देयर. ठीक है, मैच फी कट फॉर दैट मिस्टेक. यार बताऊं, ये फाइनेंशियल डंडे पड़ना भी मेरे हिसाब से सोल्यूशन नहीं है. आई टेल यू वन थिंग. ठीक है, दिस आइडिया दैट वार में सब्जेक्टिविटी है इसलिए ये बुरा है, भाई वी कांट इवन एग्री ऑन व्हाट इज अ येलो कार्ड टैकल आल्सो. समटाइम्स बंदे ने ऐसे खींच लिया,
बीच ऑफ द फील्ड पे इट्स अ येलो कार्ड, अदर टाइम्स इट्स नॉट, समटाइम्स इट्स टू अर्ली फॉर अ येलो कार्ड. अगर आपने सेम टैकल 5th मिनट में मारा and उससे लाइटर टैकल 80th मिनट में मारा, you can get two different cards, right? So subjectivity is a part of it. Now if you feel that VAR should be completely objective, then you remove the people completely and then you say कि ठीक है semi automatic offside के लिए referees लगा दो. But this idea that subjectivity is only existing in VAR and everything, this was not something you can eliminate. Handballs तो यार बहुत Yeah, exactly जैसे जोशुआ कह रहे हैं ना, handballs are much complicated, but that's the thing. There are so many variables. When if you look at a still image, अब जैसे ट्विटर पे एक इमेज दिखा देते कि बंदा ऐसे कर रहा है, बॉल हाथ पे पड़ गई, बट बॉल उसके हाथ पे कैसे पड़ी, राइट? अगर आपके हाथ पे बॉल बहुत क्लोजली पड़ी है या बहुत पास से पड़ी है, तो स्पीड से पड़ी है, देन यू कांट डू इट. बट letter of the law says that this is it. So if you just want to go by the letter of the law, then you remove the human element and you make it all semi automated, yeah. or you make something like that, because ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं. अभी यूनाइटेड वाला गेम अगेंस्ट पैलेस, वेयर द गाय हैड नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, बट That द the बॉल ball हिट is हिज हैंड. hitting his arm. Yeah, इट वाज फार अवे, इट वाज नॉट, क्या कहते हैं, it was not with a lot of pace also, but the guy had no intention to change the trajectory of the ball and everything. So do you go with intent, but then how do you determine intent? ये काफी सारी चीजें होती हैं, राइट? yeah, हमारे and नॉर्थ लंदन डार्बी में. exactly North London Derby. That handball, I would rather say that Romero's handball in the United game was much more of a penalty than the handball that was Mhm. given against you. Yeah. Because, like in slow motion, it looked like Madison went for the tackle and Mm. ball came off Madison to hit Romero's hand. Right, the ball's trajectory Mm. actually changed a little Yeah. bit. Is what actually I To hit. could Yeah. make. Yeah. Yeah. So then, do you kind of how do you make such decisions, right? The Which is what. subjectivity of the referees Yeah. are always going to be there, which you Exactly. can't take out of the game, and it's a part and parcel of the game. We have Mm. seen this so many times, right? Yeah. uh, if I have to just like mention, like every team, if today just decides, every fan, if today just decides to like, jot down all the decisions that have gone against them in the last 5 years, they can Mm. probably take out like 50 to 100 decisions that may have gone against them, right? Mm. It's gonna happen to everybody. Problem here is that I can understand where there is a judgment call, right? Mm. But something as clear as this shouldn't be ignored by the VAR, Mm. uh, which is the main problem for me. Of course, as a Tottenham fan, I'm not gonna complain that we won eventually, right? Mm. If that goal would have gone on, again it's ifs and buts. We don't know Mm. what was gonna happen Mm. because Arsenal scored twice against us and we came Mm. back, Yeah. right? We played well. Mm. Uh, Probably we just needed that fire that if you score one, we would probably come and score two against you. Yeah. We did that against like every हाँ, single और team we have this year. hypotheticals में, yeah, the game Yeah, could have gone completely differently. correct. Yeah, so you can't really like predict these things. No, I agree. Yeah. But मेरे को वही So लग रहा है. the हाँ. point here isn't कि अगर वो गोल स्टैंड होता तो शायद लिवरपूल हार जाती, या Hmm. वो गोल स्टैंड होता तो शायद लिवरपूल डेफिनेटली जीत जाती. The point here Hmm. is not that at all. Hmm. Irrespective of the result, if you just take that one incidence in isolation, it's Hmm. a very bad decision in the first place. Like no one's Yeah, denying that. exactly. And uh, I don't know what's the repercussion after this now. Like for example, somebody was asking me here that as a Tottenham fan, are you comfortable? Like I know that there is not going to be a rematch, but Hmm. are you comfortable if there is a rematch? The problem here is that then it sets a wrong precedent. Yep. Like Can tomorrow, you tomorrow what is the every manager threshold? is going to ask. Yeah. Yeah, Yeah. every What manager is is the going to threshold? ask for the same thing. If That the referee misses an obvious penalty in retrospect, do you yeah, play a rematch? Because a penalty is a penalty. yeah, Do you play, अगर मान लो, मैं तो कहता हूँ मैच छोड़ो, मैं कहता हूँ नॉर्थ लंदन डार्बी है, रोमेरो ने गंदा टैकल मार के गैब्रियल जेसस को इंजर कर दिया, उससे हमारी टीम स्ट्रेंथ 80% होगी मान लो. एम आई एंटाइटल टू प्ले अ रीमैच बिकॉज भाई मेरा प्लेयर तो इंजर हो गया, कि भाई प्लेयर की गलती है, आपने उसको रेड कार्ड नहीं दिया उसके टैकल की वजह से, और यू एक एक्सीडेंटल एल्बो पड़ गई, बट नो एक्शन वाज टेकन, बट माय प्लेयर इज ऑफ कमिंग ऑफ इंजर्ड एंड एवरीथिंग. सो yeah. ऑल आई एम सेइंग इज दैट देयर इज, ये तो फिर एक इतना स्लिपरी स्लोप हो गया कि आप हर चीज के लिए मांग सकते हो. Yes. Then the कि 38 game season will just go on खत्म ही for नहीं like होगा, 60 game. खत्म ही नहीं होगा. Yeah. या. सो So am I comfortable with the rematch? I'm not. The only reason is not because I am scared that we might lose.
Hmm. I'm not like I wasn't like after yesterday's game. Actually, I mean Saturday's game. I'm actually confident that even if it's City, Tottenham will give Hmm. a good fight to them. Yeah. Uh, the only reason we could not perform well after that like 65-minute mark is that just Liverpool just went into a low block, and Hmm. we can't break a low block. Hmm. We just can't. Hmm. Uh, I would rather say if the rematch happens 3 months, 4 months down the line, I'd be more happy because Bentancur would be back. We would Yeah. like we would take like we would add a few more players in this same thing, right? You Hmm. can't like there has to be something that you have to draw the line, right? Hmm. I don't think most Liverpool fans like say like, if I have to like if I probably speak to Nidhi and Manas today, they will also not ask for a rematch. I'm not sure. I'm just of course No, it's no, my they conjecture, won't. Yeah, they're sensible right? They people. won't. Yeah, they're sensible. Uh, because rematch is not an option here, Hmm. right? Yeah. The problem lies with the referees. The problem lies with the VR. All 20 clubs should come together. All, Yeah. uh, I mean, and they should make some statement, some front to Hmm. PGMOL and FA saying that if this continues, where does Hmm. the game go from here, Yeah. right? Uh, I read that Liverpool statement also. I think yeah, I agree with 99.9% of that statement. The only 0.1% of that statement I don't agree with. Jispe, of course, a lot of fans and a lot of neutrals are celebrating is that whole thing about escalation and yeah, resolution. I think 99.9% of the statement talks about everyone coming together and finding solutions. ये मैंने एक और चैनल पे भी similar view सुना था आज. But my thing when I read the entire statement was, wow, they're making it a Premier League wide problem. That's a beautiful statement. And then in the end, I saw them saying ki Liverpool will explore a range of options from escalation to resolution, which as much as I love my Liverpool fans, sounds like a threat slash entitlement. mhm, There are smaller clubs who receive far less attention when things don't happen. This time it happened with the big club. If it happened with Arsenal, I'm sure it would have been same. I'm sure it would have been the same with City and Chelsea and United and everyone. You tell me which fan base in the Premier League does not think there is not a conspiracy by the refs against them. yeah. Every United single, think, United thinks, we think, Chelsea thinks, City will think. ठीक है और कौन स्पर्स ऑफ कोर्स हो गया स्मॉलर क्लब्स थिंक दैट बिग क्लब बायस है बिग yeah, क्लब्स थिंक कि हम लोगों के अगेंस्ट एक एक की बायस है so yeah, this is I'm just saying in a general level. Again, the reason I am avoiding talking about that Liverpool Spurs game is because we have seen literally the worst example of the implementation of the VAR. बाकी सारी चीजों में तो आप इधर उधर कर सकते हो ये तो प्योर गड़बड़ थी आप जैसे लास्ट ईयर भी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आर्सेनल का एक ब्रेंटफोर्ड का एक ऑफसाइड था दे फॉरगॉट टू ड्रॉ द लाइंस ओनली yeah, it's that level this is the worst thing yeah, but if you talk about VAR in general it gets a lot of things right which is why I think it's not feasible to scrap it we see the when do we celebrate VAR के अच्छे decisions we just say जब Gabriel वाला था against United it was millimeters offside that was yeah, perfect implementation of VAR of course United fans will say कि hard done and everything फलाना धमकाना जब एक गोल डिसअलाउ हो गया था again against United because Rashford took the ball out right yeah, again that was good implementation of VAR इतने सारे ऑफसाइड ऑलमोस्ट हम ऑन अ वीकली टू बाई वीकली बेसिस देखते हैं जहाँ पे चाहे चैंपियंस लीग हो चाहे प्रीमियर लीग हो दोज ऑफसाइड्स आर करेक्ट कि ये बंदे ने यहाँ पे इंटरफेयर किए द प्रॉब्लम आई थिंक वो लॉट ऑफ पीपल हैव इज कंसिस्टेंसी नहीं है आप गेम टू गेम सेम VAR डिसीजन अलग अलग हो जाता है yeah, which I think the only way you get consistency is you get semi automatic refereeing you take the human out of it because जब तक एक ह्यूमन इन्वॉल्व है यू विल गेट कंसिस्टेंसी एंड इफ यू आर exactly, सेइंग कि एक उसको ब्लैक एंड वाइट ही कर दो बॉल हाथ पे लगे चाहे किसी ने गोलकीपर ने उठा के एक अटैकर के हाथ पे आके बॉल मार दिया इट्स अ हैंडबॉल एंड एवरीथिंग तो फिर ठीक है देन इफ यू वांट टू डू इट दैट वे फेयर इनफ बट आई थिंक देयर शुड ऑलवेज बी रूम फॉर इंटरप्रिटेशन बिकॉज दिस इज व्हाट आई डोंट गेट रूम फॉर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए हैंडबॉल्स के लिए बट या फिर नहीं होना चाहिए हैंडबॉल्स के लिए बट जैसे कर्टिस जोन्स वाला टैकल था उधर रूम फॉर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए yeah, हाउ कैन यू हैव ब्लैक एंड व्हाइट फॉर हैंडबॉल्स कि अगर हाथ पे लगे हैंडबॉल दे दो बट नॉट व्हेन इट कम्स टू टैकल्स यू हैव टू मेक इट कंसिस्टेंट कर्टिस जोन्स
का पैर बॉल के ऊपर से रोल होके गया, टैकल पड़ा, लेग ब्रेकर हो गया, डेंजरस प्ले था, उसको रेड कार्ड मिल गया. Now It's some it's people will it's a say, it's a red card as clear as day. yeah, I think Chelsea player also Gutso I think got the Gusto, same. yeah, Gusto I think got the yeah, same yeah, red card. yeah. And like I don't think any player like I saw Neville's Gary Neville. I think he just speaks Hmm. gibberish, but his statement was that until and unless it's an intentional foul, you shouldn't give a red card. I don't think any football player would go into a foul intentionally to break somebody's leg. It Yes, always agreed. happens by a mistake, like just that Hmm. moment before, if you take the ball out from his Hmm. stride, and suddenly that player hits your leg, it's Hmm. a potential leg breaker. If your Hmm. studs up and going into your एंड shin, दैट it's समबडीज a red लेग इज card. प्लांटेड, तुम उसके शिन शैटर कर सकते हो. नहीं, वी आर Yeah, वेरी फेमिलियर विद इट. सेम थिंग जब एडी एनकेटिया ने विकारियो पे भी टैकल कर दिया. आई डिडंट लाइक द एक्सप्लेनेशन अबाउट द yeah, फैक्ट कि उसका अगर दूसरा टांग लगता तो रेड कार्ड होता, बट ये क्योंकि नीचे वाला टांग लगा है तो रेड कार्ड नहीं है. yeah, देखो, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीवन सेइंग दैट कर्टिस जोन ट्राई टू गो फॉर द बॉल, इट स्लिप्ड ओवर द बॉल, एंड इट, that is why it is not a red. But this is what I'm saying: you are trying to provide context for tackles, which fair enough, you are entitled to. But yeah, then you can't say there cannot be a room for interpretation by the referees for handballs. ठीक yeah, है, अगर रेफरी को लगता है कि नहीं, इस बंदे को कोई आइडिया नहीं था हैंडबॉल का, मैं तो सोच रहा हूँ ये हैंडबॉल नहीं है, या फिर अगर वीआर को लगता है कि नहीं, इस बंदे ने तो ट्रेजेक्ट्री ही चेंज कर ली है बॉल की, आई थिंक इट्स अ हैंडबॉल एंड इसके बॉडी से सिलुएट दूर दूर है, तो my thing is that either you completely make it black or white. If it's a leg breaker, it's a leg breaker. अब आप चाहे घास पे, गीली घास पे, स्नो पे फिसल के आपने उस पे टैकल मार दिया, then it's fine, then it's still a red card. Otherwise, if you want interpretation in tackles, if you want interpretation in, भाई टो नेल से ऑफ साइड है या फिर आर्म पिट से ऑफ साइड, इतना तो ऑफ साइड नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एक्चुअल एडवांटेज नहीं है, so then fine, you make it all black and white. But then I don't think that's football, right? If you just make it right, all black and white, there's no interpretation, which is why, man, अगर मेरे ऊपर होता, मैं पहली बात तो वार को लाता ही नहीं. It's ruined so many things. It's ruined so many things. You can't even fucking celebrate properly. yeah, yeah, मतलब एक बंदे ने अगर 30 यार्ड से वॉली भी मार दिया है, ठीक है, बट आप चेक कर रहे हो कि एक स्ट्राइकर ने गोलकीपर की आंखों के सामने आके तो खड़ा नहीं हो गया, ब्रो, लाइक कम ऑन. So I just think, yeah, I think Jones का रेड था. I think there should be room for interpretation though. But I think just the second some decision goes against us, next week अगर if we lose to City by some dodgy penalty or some dodgy red card, I will also rage. Raging सबका हक है, ठीक है, but we'll have to move on, man, because we yeah. can't have it every way that it works our way. That's it. Yes, yes, I agree. And from that, basically, we move on to a very, like, we'll just briefly touch upon that, because I think we, as football fans, we need to speak about this. Hmm. Is that after yesterday's result, I mean Saturday's result, uh, Destiny Udogi, because of that Jota yellow, Hmm. first Jota yellow, got Racist. racist comments Hmm. on their Instagram, on his Hmm. Instagram. Hmm. And I put out a tweet yesterday saying that if you can't digest a football result, Hmm. you shouldn't watch football then, Hmm. because you can't let football to be an outlet for your ingrained racism. And today I just like want to point this out, that people will of course say, classic Liverpool fans, Hmm. but tomorrow, would are I mean, as football fans, are we going to say that our football fan base is entirely clean? Hmm. No. These elements exist in every fan base. It's not Hmm. about Liverpool, it's not about Arsenal, it's not Hmm. about Tottenham. Hmm. It's about just people being racist, and that's across fan bases. Hmm. And as football fans, we should point it out. If it happens from our own fan base, if it happens from some other fan base, we should always point this out, and we should stand against this. Hmm. Yeah, very very with the united front. And I think I saw some really great tweets from Liverpool fans on Tottenham's statement today, Hmm. where they've been apologizing to Udogi for Hmm. their, I mean, some elements of their fan base. So I would genuinely request
any people in my community, in this channel's community, is to not brand all Liverpool fans to be racist. Hmm. They are not. We have seen so many people, Nidhi bhai hai, Manas bhai hai, we have seen so many people Hmm. where I don't think they come from that point of view. Hmm. They are not such people. So Hmm. let's not brand the entire fan base because of, I wouldn't say a few bad apples. I would probably say the bad apples are a lot more than just few. Hmm. Yeah. But it's not. It doesn't define the entire fan base. So Yeah. if there are any people, I saw a few comments here where we were, where they're asking about Destiny Udogi's racism. But we have to basically Hmm. point this out as soon as possible. Daksh, I think we must have seen this. I think Saka faced this after the इंग्लैंड पे हुआ England था। penalty. अरे वो छोड़ यार, इट्स नॉट इवन अबाउट राइवल फैंस, इफ अ प्लेयर फ्रॉम योर ओन क्लब इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल, उसी को Yes. रेसिस्ट कमेंट्स आने लग जाते हैं। Yeah, Davinson Sanchez did faced racism last season. या Our own player from our own fan base. So I think it's the overall fan base is not that. The overall fan base is not racist. Is a few people, a या lot more than a few people who are racist, and unfortunately, that just maligns the entire fan base. या But Ivan uh, Toney, Sturridge, Welbeck, yeah, so many people, everyone, yeah, everyone gets it. Everyone gets these racist things, and sometimes it's rival fans, sometimes it's your own fans. It's correct. not just that, it's there's also sexism. अगर कोई female commentator किसी चीज पे बोलती, go back to the kitchen or something, you Yes. slag मतलब बहुत name calling होती है. So just generalization obviously never helps, but just call out whenever you see it. Yeah. Don't be Yeah. edgy, right? अगर आज आपका आज if you are celebrating and let's say you are making fun of somebody, don't just call it out. Just and trust me, the most powerful phrase that a guy can use to stop terrible behavior is saying that's fucked up. I remember somebody was being a little sexist in a group I was a part of. And I just told the guy, bro, that's fucked up thing to say. And uske baad, that's it. It's humiliating for those people. Yeah. Twitter पे शायद से इतनी शर्म नहीं होगी, but just call these things out. Call these things out. Yeah. Yeah. True. And I think as sensible football fans, it's our. I mean, I don't take this responsibility on myself, but Hmm. अगर हमारे पास एक आज प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास अगर ये एक जरिया है जहाँ पे हम लोगों को ये बात बता सके, तो Hmm. इट्स दिट्स द बेस्ट वे दैट आवर प्लेटफॉर्म कैन बी यूज फॉर. तो अगर आपके आजू बाजू आपको अगर कहीं दिखता होगा ऐसे, फॉर Hmm. फुटबॉल, फॉर एनीथिंग एल्स, प्लीज पॉइंट इट आउट एंड जस्ट मेक श्योर Yeah. दैट दिस कम्युनिटी इज वेलकमिंग फॉर एवरीबडी, राइट? Mm-hmm. Yeah. दूसरी चीज ब्रो, मूविंग टू वन ऑफ द थिंग्स, राइट, मैंने मेरे सारे कमेंट्स में, सारे वीडियोस में, ट्विटर पे ये कहा है कि टॉटनहम probably didn't deserve to win, right? Hmm. Now, ये comment में I have to like point out two things here. एक तो, yes, Liverpool have gotten a few calls against us in the past, and as most other, I mean, a lot of other teams have also gotten that. Uh, Similarly, I think मेरे ख्याल से टॉटनहम को भी किसी किसी गेम्स में एडवांटेज मिला होगा against like some smaller teams that when we talk about them, right? About the Champions League final, I think the rule was fucked up, and the rule, आई थिंक 1 जून 2019 में वो रूल इंप्लीमेंट हुआ था और 2 जून 2019 को चैंपियंस लीग का फाइनल था, कि उसमें ऐसे कहा था कि बॉल किसी भी तरह से आपको हाथ को लगेगा, जो दक्ष कह रहा था कि देर इज नो सब्जेक्टिविटी हियर. आपके हाथ को बॉल लगा है, कहीं से भी लगा है, तो हम उसको रेड कार्ड देंगे, आई मीन उसको हम पेनल्टी देंगे. Hmm. वो रूल उन्होंने लाया, 1 जून को इंप्लीमेंट हुआ. अनफॉर्चुनेटली दे शुड हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द न्यू सीजन, Yeah. बट वो मिड, मतलब बिफोर द चैंपियंस लीग फाइनल उन्होंने वो रूल लेके आ गए, Hmm. और जिसमें अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट मिनट में ही जिसका बलि का बकरा बन गया वो टॉटनहम था. Yeah. Was the call wrong? I think the rule was wrong, and the Hmm. call was according to the rule. So unfortunately हम उसमें ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकेंगे कि क्या सही था या गलत था. रूल Yeah. गलत था, उन्होंने बाद में बदल दिया. टॉटनहम का ऐसे बहुत बार हुआ है कि कुछ रूल्स हम, मतलब हमारे साथ डिसीजंस होने के बाद वो रूल्स बदले गए. Yeah. जैसे कोविड ईयर में, इफ यू रिमेंबर, एरिक डायर जंप्ड एंड पीछे से किसी ने, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड ओनली, आई डोंट रिमेंबर, साउथहैम्पटन आई गेस, Hmm. पीछे से किसी ने हेडर किया एंड एरिक डायर ऑफ कोर्स डिड नॉट नो कि पीछे से बॉल आ रहा है, उसके हाथ को लगा, पेनल्टी मिल गया. Hmm. देन दे चेंज द रूल अगेन कि हम ऐसे टाइम्स पे पेनल्टी नहीं देंगे. दैट रूल वाज चेंज मिड सीजन. तो
उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, रूल लुक गलत था। मैन, ये ना अगर आप कोई भी 2 क्लब का पेयर ले लो ना, दिस इज़ अनएंडिंग मैन। आप यस। कभी भी कुछ भी कर लो, आप कितने भी साल पीछे चले जाओ, यू विल ऑलवेज़ फाइंड समथिंग दैट फेवर्स वन टीम एंड समथिंग दैट फेवर्स अनदर टीम। आई विल या टेक पैलेस वर्सेस आर्सेनल इन दिस सीज़न। मेबी एज़े डिज़र्व्ड अ पेनल्टी, जो आई थिंक पार्टे ने ऑलमोस्ट कंसीड कर दी थी, where या Palace deserved a penalty. Couple of seasons ago, MacArthur एक था उनका प्लेयर, अभी भी है मुझे पता नहीं, kicked Saka. And when I say kicked, I don't mean like how you would kick a ball during a free kick. He kicked Saka like that at the back of his leg. Nothing, absolutely nothing. या Right? If you go on Arsenal Twitter, there is this famous Arsenal versus Wolves match where a Wolves player was running आगे, David Luiz was running पीछे, and the Wolves player का boot touched David Luiz की knee. David Luiz was given a red card and sent off. And VAR was already there at that point of time. The point is, you can pair up any two clubs. लिवरपूल स्पर्स कर लो, स्पर्स आर्सेनल कर लो, ठीक है, सिटी यूनाइटेड कर लो, आपको हर क्लब में हर साल यू विल फाइंड अ डिसीजन और टू विच इज अ लिटिल डॉजी, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दैट यू विल से येस्टरडे, लिवरपूल फैंस कहेंगे कि येस्टरडे वाज अ रॉबरी, फिर आप कहेंगे CL 2000 इतना वाज अ रॉबरी, फिर लिवरपूल फैंस उससे 2 साल पहले और चले जाएंगे, दैट वाज अ रॉबरी, फिर स्पर्स या फैन उससे 1 साल पहले चले जाएंगे, बट इसका क्या हुआ? एंड यू विल इट्स get अ old by the time you keep counting back नेवर over and एंडिंग over. लूप। Yeah. या बट या मैन, आई थिंक वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट वीआर एंड देयर Hmm. इज, हम दोनों यहाँ पे बात करके आई नो कि कुछ ज्यादा बदलने नहीं वाला है। वी नो कि Hmm. अगले हफ्ते सेम ऐसे ही कुछ इशू हो जाएगा। आई Hmm. थिंक कल नॉटिंघम फॉरेस्ट के गेम में भी कुछ तो इशू, आई डिड नॉट सी द गेम, आई वाज अवे Hmm. yesterday, but I think there was a red card in the Nottingham Forest game also, which I think Cooper has spoken about in the press conference. Hmm. तो कहाँ रुकेगा ये, कब रुकेगा पता नहीं। इंग्लिश Hmm. रेफरिंग इस सीजन में बहुत खराब रही है ओवरऑल, वीआर के साथ वीआर के बिना, Hmm. ये हमें सबको पता है। तो जब तक ये रेफरीज मतलब अगेन सॉल्यूशन हम दोनों को नहीं पता है क्या कर सकते हैं। Hmm. दिस इज द बेस्ट रेफरीज दैट इंग्लैंड कैन प्रोड्यूस टुडे। Hmm. हाउ टू incentivize their performance, how to incentivize their good calls, we Hmm. have absolutely no idea about that, Hmm. Hmm. right? And just Daksh, now we of course spoken about mainly VAR, Yeah. about the Tottenham Liverpool game, but कुछ चीजें जो मुझे point out करनी है about the performance, like you rightly Hmm. said, क्योंकि ये वीआर डिसीजन हो गया, 2 रेड कार्ड हो गए, उसके वजह से जो गेम में कुछ अच्छी चीजें या कुछ बुरी चीजें इन टर्म्स ऑफ Hmm. टैक्टिक्स एंड द परफॉर्मेंस जो हुई है, Yeah. वो पूरी की पूरी नजरअंदाज हो गई। Hmm. When I say that we didn't deserve to win 3 points is because after they went 2 men down, I think जिस तरह से उन्होंने रेजिलियंट वे से एक डिफेंस खड़ा किया हमारे सामने, Hmm. हमारे पास क्वेश्चंस नहीं थे उनको कुछ आस्क करने के लिए। हम Hmm. सेम पैटर्न में अटक गए थे। Hmm. बिसुमा यूज्ड टू ब्रिंग द बॉल फॉरवर्ड, मैडिसन को चला गया, मैडिसन से सोलोमन, सोलोमन से मैडिसन, मैडिसन से Hmm. सार, सार से कुलुसेव्स्की, और हम वो पेरीफेरी में ही खेलते रह गए थे पूरा टाइम, राइट? Hmm. We played really, really well in the first half. I Hmm. think first half we should have killed the game then and there. हमारे Hmm. एक गोल मारने के बाद हमने, you must have seen that हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे हो गया. We Hmm. stopped putting more efforts. मुझे याद है एक बार सॉन्ग को एक जगह पे अच्छे बॉल मिला था. मैडिसन was in a really good position to score if the pass Yeah. was If played to Son him. found the ball, but हाँ. और सॉन ने बहुत ही दूर से एक शॉट लिया है जो लाइक एलिसन के हाथ में, लाइक इट्स लाइक अ Hmm. गोलकीपिंग प्रैक्टिस की जैसे उसके हाथ में चला गया. Hmm. वी वी टुक द फुट ऑफ द पेडल, जो हमें नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी. लिवरपूल जैसे टीम के साथ आप ये नहीं कर सकते. आप Hmm. 2 गोल्स मार लो जल्दी से, आप गेम किल कर लो फर्स्ट हाफ में, immediately you are in the better position coming into the second half. Yeah. Having said that, credits to Liverpool, man. They Hmm. they defended really well. उनके पास of course after Jota's red card, Salah had to go out. उनको more defenders they had to bring in. वो जो कहते हैं कि luck favors the brave, Hmm. हमने कोशिश करना छोड़ा नहीं. That's one of the like big Yeah. positives that I have. Yeah. And Pedro Porro ने जो वो बॉल डाला है, I think Matip, again unfortunate for them,
बट हमने भी कितनी बार ओन गोल वो की वजह से क्लीयरेंस मैच कहीं और हारे हैं। पड़ता, कोई और ब्लॉक कर लेता, एंगल गलत करेक्ट। लगता, 2 इंच राइट या चले जाती, पोस्ट पे लग करेक्ट। जाती, कुछ भी हो सकता था। बट आई करेक्ट। मीन या यार, fortune favors the brave kind of thing always works, which is something I was annoyed by during our North London derby कि after Son and Madison went off for you and last 10 minutes पे हमारे पास बॉल थी, हम कुछ कर नहीं पाए थे। I think that was the difference between you versus Liverpool and us versus you कि you tried to get behind Liverpool despite their block. We were या always playing in front of you, it felt like. Like या remember जैसे Madison ने turn कर दिया था Saka को, you were या behind our lines and then you could cut back in that side. ये यस। हम तुम्हारे against नहीं कर पाए, which we did a lot somehow against Bournemouth, but that's Bournemouth. Um, but yeah, I think there are some problems, some issues. I won't even say problems. I will say there are some areas where you can improve a lot. Uh, Number one, I would say is stamina. Stamina क्या? Like I know I just saw somebody saying कि Arteta is not learning, but and just constantly rotating Son and Madison. यार आई या थिंक दोनों टीम्स का बताऊँ क्या है यार. Arteta is not the reason. I think Arteta is keeping Saka there is for two reasons. Number one, I don't think he trusts anybody else to play that right wing position that well. एंड वैसे भी जब इतनी इंजरीज हो जाती हैं आपके प्लेयर्स को और आप उसके बाद भी सब्सटीट्यूट कर लेते हो, हमारी वैसे भी आदत रही है, हम गेम का कंट्रोल लूज कर देते हैं. बट या आई एग्री, साका शुड बी मैनेज्ड मोर. And maybe if I don't know if Ange is managing Son and Madison because he understands how crucial they are to him. Because if you play Son Madison for 80, 90 minutes and then they can't do it, or if they're tired, or if they get a knock or something in the next game, and you lose them for a game or two, we've seen Spurs with Son and Spurs without Son are very different. Richarlison is not clinical. Solomon, I think, is still finding his feet. Brennan didn't play. Brennan नहीं खेला था ना लिवरपूल वाला नहीं गेम, नहीं, इंजर्ड था आई थिंक। right? आर्सेनल के अगेंस्ट ही उसको हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस आ Hamstring गया हो था। गई थी, right? So Brennan wasn't playing, and Veliz is too new right now. ठीक या है. उसके ऊपर आई थिंक योर बिगेस्ट क्रिएटिव फोर्स व्हेन इट कम्स टू अ लो ब्लॉक इज मैडिसन, जस्ट लाइक फॉर अस इट्स ओडेगार्ड. या एंड इफ यू लूज हिम देन अगेन वो क्रिएटिव बर्डन किस पे फॉल करेगा? ईदर सॉन हैज टू डू इट बिकॉज, और व्हेन बेंटंकुर कम्स या फिर कुलुसेव्स्की पे पड़ जाएगा. एंड या आई थिंक वाइट प्लेयर्स, जब तक बेंटंकुर नहीं आता, वाइट प्लेयर्स पे अगर जितना भी क्रिएटिव लोड होता है ना, it's easier to stop them because you can 2v1 them far away from the pitch. या With Madison, he gets into those float karte karte, he'll get up into any space, find a space, and then play that beautiful ball behind the line. So for me, there are some areas to improve for Spurs. The number one, मैंने जैसे end में कहा था, if you hang in with Spurs, if you frustrate them, जैसे लिवरपूल कर रही थी 9 men के साथ, like it looked like Spurs are chasing for the winner. And अगर एक team who don't necessarily have to beat Spurs, I would say like जैसे शेफील्ड का गेम तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल था. सेम थिंग मान लो अभी जैसे लूटन है, एज मच एज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू, इफ लूटन कम्स, तुम्हारा अवे है ना फिक्सचर? यस। हाँ. सो if you go to Luton and they decide we don't want to win, getting a point against Spurs is a massive thing for us. And if they're not there to win and just to defend, it'll be a very long day at the office for you guys. Um, but that being said, you will have to find different solutions. We found different solutions. जब हम कॉन्टे वाली स्पर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, दैट वाज आल्सो प्रीटी लो ब्लॉक की टीम. तो वी स्टार्टेड शूटिंग फ्रॉम आउटसाइड. एक पार्टे वाला गोल हमने मारा था फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. सो यू विल हैव टू फाइंड solutions from scoring from long distance. You will have to find solutions for getting behind that defensive line and cutbacks. या Um, and so I think there are plenty of areas for you to improve. या Um, अरे सो hmm, बिकॉज अगेन I don't think we are in the title race, right? hmm, Because we have so many issues to still figure out. जैसे like you said right in the beginning कि hmm, अगर टॉटनम का जो एक अटैक रहता है, अगर आप 70 मिनट्स तक आप अगर वेदर कर पाओ तो आप शायद लास्ट 20 मिनट्स में रिजल्ट्स निकाल सकते हो. आर्सेनल के साथ आपने अगर देखा होगा तो सेम हुआ. आफ्टर hmm, 75th मिनट यू कुड सी दैट वी वर विजिबली टायर्ड. hmm, हम मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस दिखा रहे थे बीच बीच में, अटैक hmm, बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बट ओवरऑल वी वर टायर्ड. yeah. दैट्स आल्सो बिकॉज मैडिसन सॉन दे वर नॉट फिट फुल्ली. Hmm, मैडिसन का वो नी ट्विस्ट हो गया था. सॉन हैज hmm, बीन कीपिंग इल ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स, hmm, जिसकी वजह से उसको लिवरपूल के मैच में भी 65th और 70th मिनट पे आई थिंक ही हैड टू कम ऑफ. hmm, और मैनर सोलोमन देन केम आउट. yeah.
हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हॉयबियर ने आके एक वही। अलग डायनामिक एक लेके आ गया गेम में, क्योंकि अगर बिसुमा खेलता है तो ही डजंट हैव अ गुड लॉन्ग बॉल इन हिम, बट हुँ, हॉयबियर डज हैव दैट लॉन्ग बॉल। हुँ, तो उसने फिर बॉल वाइड प्लेयर्स को या बाईपासिंग द एंटायर मिडफील्ड वो देना शुरू कर दिया। आते हुँ, ही इमीडिएटली बॉल आगे फेंक दो, राइट? हुँ, तो कुछ कुछ जगह पे हमारे पास वो प्लान भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट कैन वी डू इट अगेन एंड अगेन जब आपके पास एक क्वालिटी लो ब्लॉक होता है? आई एम हुँ, नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमने अब तक सिर्फ शेफील्ड के साथ एक लो ब्लॉक देखा है, जहाँ पे ऑफ कोर्स हमने कुछ चांसेस क्रिएट किए, बट वी हैड टू वेट फॉर द लास्ट मिनट गोल, राइट? हुँ, हुँ, सेम विथ लिवरपूल, लास्ट मिनट गोल आफ्टर देयर रेड कार्ड दे वेंट इनटू अ लो ब्लॉक, और हम फिर अगेन वी कुडंट पेनिट्रेट देयर डिफेंस एट ऑल। हुँ, हमारा सिस्टम वर्क करता है जब हमारे वाइड प्लेयर्स ऑपोजिशन के डिफेंडर्स को स्ट्रेच कर सके, और जो हाफ स्पेसेस बनते हैं उसमें सार, मैडिसन, बिसुमा जैसे प्लेयर्स फिर वो स्पेसेस ऑक्यूपाई कर सके, हुँ, उडोगी और पोरो आके वो स्पेसेस ऑक्यूपाई कर सके। अगर वो नहीं होता है, अगर डिफेंडर्स डोंट टेक दिस, आई मीन ऑपोजिशन डिफेंडर्स डोंट टेक दिस बेट, हुँ, देन वी हैव एन इशू कि हम फिर ये हाफ स्पेसेस कहाँ से लाए? हुँ, हम how does somebody like Madison and Son then find their space? या Having said that, I think both Son and Madison have a good quality in them to attempt a good shot from the outside of the box. हुँ, जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट भी देखा, एलिसन पुल्ड ऑफ आई थिंक टू ग्रेट सेव्स, हुँ, एंड एक वो मुझे याद है सेकंड हाफ में आई थिंक एक रिचार्लिसन का एक ऑफसाइड जो गोल हमने मारा था, लेकिन रिचार्लिसन ऑफसाइड था। इफ यू सी दैट पास फ्रॉम मैडिसन टू रिचार्लिसन, अगेन अ ब्रिलियंट पास। हुँ, तो वी विल ऑलवेज फाइंड इन द 90 मिनट स्पेसेस शायद ऐसे 2 या 4 मिनट जहां हुँ, पे हम वो स्पेसेस, जब अपने ऑपोजिशन आपके कंसंट्रेशन लूज करती है हुँ, थोड़ा, थोड़ा अपना लो ब्लॉक या अपना शेप जो है वो थोड़ा सा छोड़ देती है, हुँ, तो we have the quality to find those spaces and find those हुँ, openings. It's the only problem for me right now is that it's just 7 games and I want to see more and more. Yes, हुँ, somebody has put in the Son का वॉली जो उसने चेस्ट करके एक जो वॉली लिया, जो मिस uh, हो गया था। हुँ, जो एलिसन सेव्ड, एलिसन ने एलिसन सेव करके टिप कर दिया था ना? टिप कर दिया, यस यस। हाँ, तो आई रिमेंबर। it's and he's definitely currently the best goalkeeper in the league, right? तो you can not, और दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लग रही थी कि जब हमें पता है कि वैन डाइक और मैटिप एरियली इतने स्ट्रांग है, फिर भी हम बार बार एरियल क्रॉसेस डाल के क्यों खेल रहे थे? द गोल हुँ, इवेंचुअली केम फ्रॉम पोरोज लो क्रॉस, या राइट? आप हुँ, बाईलाइन पे जाके अगर आप क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा आपको ज्यादा बेटर रहेगा टू हुँ, गेट अ गोल। बट कुलुसेव्स्की फॉर एग्जांपल बॉल लेके, सिंस इज अ लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, हुँ, एवरी टाइम ही वाज जस्ट गोइंग इन, कटिंग बैक इन लेफ्ट साइड से, लेफ्ट फुट से फिर एक बॉल हुँ, अंदर डालने की कोशिश करो। It's हुँ, that's the issue for me right now. या Injuries again. Luckily, we haven't had any major injuries so far. हुँ, हुँ, Apart from like Perisic, जो main players है वो still starting 11 के जो players है वो still fit है. हुँ, पर क्या हुँ, ये हम वैसे कर रख पाएंगे पूरा सीजन? That's the या problem. So again, I'm not sure about this. डेप्थ But yeah, डेप्थ आई enough थिंक इज़ about, द बिगेस्ट हाँ, saying yes, depth yes. is the biggest issue, and I think one added variable जो I guess काफ़ी under the radar जाता है is that Premier League games are 90 minutes now. They are at least 110 minutes, Hmm. almost 110 minutes, and that is Hmm. something that depth will make a lot of things count. जिस टीम के Hmm. पास ज़्यादा ऑप्शंस या इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे फ्रॉम द बेंच, quality of players that can come up the bench, whoever has them better will have a better chance of winning. I say I Yeah. make 5 substitutions on minute 70 एंड 90 मिनट्स के बाद भी मैं कहता हूँ 10 मिनट्स का और एडेड टाइम हो गया एंड पहले Yeah. 5 मिनट हो गया तो 90 प्लस 105 मिनट्स माई प्लेयर्स ऑफ द बेंच विल हैव 35 मिनट्स टू मेक एन इम्पैक्ट अगेंस्ट अ टायर्ड टीम विच इज़ वाई Yeah. आई थिंक मैनेजर्स हैव टू मैनेज देयर स्क्वाड बेटर जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती है अर्टेटा की बट या आई थिंक tiredness is something you can try and catch up to Spurs because when Spurs get tired, especially players like Romero get tired, they make rash decisions. They lunge into tackle, a lazy leg. Some person might just get pulled out of the position. I think मैं एक बहुत चीज़ देख रहा था. Salah by himself was पूरा एक प्लेयर को ना वाइड लाइन तक ड्रैग कर लेता था. And I think if it was 10v11 and Darwin Nunes came on ना,
Salah would have found Darwin Núñez, and Darwin Núñez would have been a massive, massive threat for you guys to deal with. But Yeah. वो तो चल hypotheticals वाली बात हो गई. I think for now, if I was a Spurs fan, but if I was a Spurs fan, um, I would only look till the January transfer window and try and be in the top three. If Yeah. that can be done, as stingy as Daniel Levy is, he will see an opportunity not only to keep the club upper wali positions pe, but also to clear out his name. This is a good PR opportunity for Daniel Levy also, by the way. So he also has a personal stake in this. Yeah. If you get a solid striker in Jan or whatever you guys need in terms of depth, a backup for Madison, backup for Udogi, or maybe a new center back, etc., whatever you feel कि आपकी problem है, in terms of depth, you guys can probably recruit in January and then go on from there. But I will say right now, focus till Jan. You have one game a week. Um, and I think that's a huge advantage for you guys. If we beat West Ham in the cup game, जो अब नवंबर में होगा, I think 1st November को है. If we beat West Ham, we will play every day. Midweek पे हम खेलेंगे till Christmas, which is a crazy schedule for somebody like our squad, जिसमें injuries बहुत common है. Yeah. So there are teams that you can pick off, you can leap over just by smartness, just by Yeah. smart recruitment and keeping the squad healthy and manageable, which is why I think Ange tries to win the game within the first 70 minutes or at least be in a comfortable enough position that he can take off Son and take off Madison. Yeah. I think apart from Sheffield, I don't remember स्पर्स लेट इन द गेम कब ट्रेल कर रही थी. शेफील्ड के अगेंस्ट तुम लोग ट्रेल कर रहे थे क्या? Yes, yes. So, या राइट. so we have trailed in almost every game so far. Brentford, they लेट इन scored द first. गेम 80th मिनट तक. 80th minute Sheffield, yes. Sheffield was the only game. Yeah. And yeah, If no, I want to see what Ange's decision making regarding Son and Madison becomes if Spurs are losing by a goal or 2 goals till the 70th, 80th minute. Does he right. still take them off? Does he not take them off? What he does, वो बड़ा important होगा because game states are very important. If you're comfortably winning 3-0, then yes, taking off Son and Madison at 70 minutes makes a lot of sense. But the manager's outlook, because even during the entire game जब लिवरपूल के साथ था ना, I could see जब भी एंज पे फोकस हो रहा था, he was not happy by a lot of things, like no shaking his head and कर रहा था. So I want to see when कभी भी Spurs trail करेगी till the 80th minute or something, क्या होगा उसके बाद. Yeah, yeah. I agree. 130 लोग इस स्ट्रीम पे है, सो प्लीज स्ट्रीम को लाइक करो, साउथ स्टैंड व्यू को सब्सक्राइब करो, ए फॉर आर्सेनल को सब्सक्राइब करो. एंड बिफोर वी मूव टू द आर्सेनल सीजन सो फार, राइट, दो ही टीम्स बचे हैं नॉर्थ लंदन. हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि fuck those northerners और Fuck the Manx. Fuck the Manx. या fuck the Manx. Liverpool, और ये साल एक Merseyside. लंदन का अगर एक अच्छा टाइटल रेस देखने मिलता है तो मजा आ जाएगा. पर 2-3 performances which I absolutely am proud of today, after the Liverpool game, is Pedro Porro. क्वेश्चंस पूछे गए थे पेड्रो पोरो पे, सब बोल रहे थे कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है. हमने वापस 40-50 मिलियन डॉलर पाउंड्स ऐसे प्लेयर पे स्पेंड कर दिए जो एक विंग बैक है. कॉन्टे चला गया है तो एक एंज पोस्टेकोग्लू के सिस्टम में वो कैसे बैठेगा. वो डिफेंसिवली बहुत खराब है, वो इन्वर्टेड रोल में नहीं खेल पाएगा. एमरसन, मेरे स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में मैं कंटिन्यूअसली यही बोल रहा था कि शायद हमें एमरसन रॉयल ही देखने मिलेगा as a starting right back for us. But the way Pedro Porro has established himself in this team now, I think बहुत ही काबिले तारीफ है. साला को, मुझे वो साला वाला एक टैकल याद है, जब जिस तरह से वो भाग के आके उसने वो स्लाइडिंग टैकल दिया है साला को. बहुत अच्छा रिकवरी इन द मिडफील्ड, ही इज कीपिंग हिज कंपोजर. दैट टर्न जहाँ पे उसने रॉबर्टसन को चाय लेने के लिए भेज दिया, वो जो एक टर्न उसने लिया है, बहुत he's making some right decisions right now. And as a football player, I think आप अपने abilities को overcome कर सकते हो अगर आप right time पे right decisions ले सकते हो.
बहुत सारे प्लेयर्स के पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, बट अगर उनका टच कहाँ पे मुझे फर्स्ट टच मेरा कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे पास कौन से मोमेंट पे डालना है, मुझे बॉल होल्ड अप कब रखना है, मुझे टैकल में अगर घुसना है तो चेंज इन द माइक्रो सेकंड और अ मिली सेकंड कैन चेंज वेदर योर टैकल इज अ गुड टैकल और येलो कार्ड और रेड कार्ड, Yep, राइट? yep, yep. सो अगर आपके पास कुछ एबिलिटीज कम भी रहेंगी तो भी अगर आप आपके डिसीजन मेकिंग अगर अच्छे हो तो आप एक बेटर देन जस्ट एन एवरेज प्लेयर आप निकल के बाहर आ सकते हो। आई थिंक Hmm. पेड्रो पोरो में एक अच्छा पेस है, एबिलिटी वाइज तो हिज Hmm. इज अ गुड प्लेयर, बट Yep. नाउ वी आर सीइंग दैट व्हाट अ गुड कोच कैन डू टू अ प्लेयर, राइट? True. True. सो आई थिंक मैन ऑफ द मैच कह रहे थे बहुत पेड्रो पोरो को सारे लोग, Hmm. डेफिनेटली डिजर्विंग। दो प्लेयर्स बाकी, ऑफ कोर्स उडोगी के बारे में हमने पूरे सीजन में बात की हुई है। हम बोल रहे थे इस मंथ में कि साका और साला बैक टू बैक टू बिग चैलेंजेस ऑन दैट विंग, Hmm. क्या वो ओवरकम कर पाएगा, और उसने आई थिंक बखूबी तरह से वो ओवरकम किया है। साका, आई नो कि फर्स्ट हाफ में साका गॉट द बेटर ऑफ उडोगी, शायद सेकंड हाफ Hmm. में उसको इंजरी की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा साका को, Hmm. सो आई एम नॉट टेकिंग Mhm. दैट अवे, पर उडोगी देन डिड कम आउट इन दैट डुएल I एज अ will I बेटर। will say I mean the judgment can be out on whether Udogi passed or not, but for me, I करेक्ट, think he's done a lot better than what most fullbacks do या, versus Salah. Definitely, definitely. Yeah. एंड देन कम्स मिकी वैन डे वेन। Hmm. मुझे एक याद है, आई थिंक साला का पास गया था लुइस डियास को इन द फर्स्ट हाफ, थ्रू पास था, आई थिंक गैक, या आई थिंक इट वाज वन ऑफ गैकपो और लुइस डियास, Hmm. एंड मुझे लगा ये गोल है, Hmm. क्योंकि मैंने स्पर्स को देखा है इतने साल में। वो जगह पे एक तो एरिक डायर होता था या फिर बेन डेविस होता था, तो आई थॉट इट्स अ गोल, Hmm. एंड देन सडनली मिकी वैन डेविन बर्स्ट इनटू अ लाइक like it's such a pace, Hmm. acceleration great, good pace, long strides, Hmm. and he beats Gakpo or Luis Diaz, whoever he was. He beat Hmm. him so comfortably, Yeah. took the ball, passed it around, started the attack again, right? Yeah. It's very nice when you have that kind of a center back. Yes. I remember versus Everton, somebody tried to play in that Beto guy, the new striker they have. Yeah, yeah. Saliba just comfortably just goes past him, takes the ball. And I'm like, imagine trying to outbody and outpace Saliba. Yeah, same thing. I can completely understand your love for Van de Ven. You need one of those authoritative center backs जो control करते थे हर एक चीज को यार. Yeah. तो ये तीन परफॉर्मेंसेस आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमें इस टीम, एंड विकारियो मैन, Hmm. अगेन रिआइटरेट, मैडिसन एंड विकारियो आर गोइंग टू बी दोस टू Hmm. प्लेयर्स। अगर हम इस सीजन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये दो प्लेयर्स के अलावा हम अच्छा नहीं Hmm. कर सकते। सो दैट्स द मेन थिंग आई फील। नाउ मूविंग टू the other North London team, man. I know Hmm. we have taken a lot of time कोई ना, just कोई ना. discussing the VAR and Tottenham Liverpool today, right? पर important फिक्चर था आपके लिए ये, Oh yeah. आफ्टर आफ्टर टॉटनम, होम पे ड्रॉ, Hmm. इंजरी स्केयर थी बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा. देन यू प्लेड लीग कप गेम which again you won. Hmm. I think I didn't see the highlights. I saw the scoreline only, but it was, I think, a comfortable game. It wasn't like you had to break a lot It of wasn't sweat. too bad, but yeah, there were moments of danger there also. Yeah, उसमें भी yeah, हम second squad, मतलब fucking Cedric was coming on, so you can imagine right, right, right. how bad it was. But yeah, Yeah, it was a win. It was a win which we were happy with. yeah. And then comes what do you call it? Just a second. I'm switching off this camera, but I'm here. ठीक है, no issues. Right. But then comes uh, the team news Hmm. कि साका जो लग रहा था इंजर्ड है वो है, खेल रहा है। Hmm. देन कम्स द न्यूज जहाँ पे ट्रोसार्ड आई थिंक मेड द बेंच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, he made the या bench. ट्रोसार्ड मेड द बेंच। Hmm. देन राइस अगेन सबको लग रहा था इंजर्ड है, वो खेल गया। Hmm. देन बोल रहे थे हम सलीबा शायद इंजर्ड है, वो भी खेल सलीबा गया, को इंजरी थी apparently. वो भी खेल राइट? गया. And when I saw the team news, I replied to your tweet saying कि that's just Martinelli and Trossard out. Trossard out मतलब Trossard सिर्फ bench पे है, that's it. मतलब Hmm. he is into Hmm. recovery. I think अगले गेम में वो शायद स्टार्ट कर लेगा या फिर good 30 मिनट्स भी खेल लेगा, Yep. right? तो सडनली जो एक क्लाउड ऑफ लाइक एक डार्क क्लाउड आ गया था Hmm. कि you were also tweeting continuously saying कि man this is bad, this is bad. Yeah.
सडनली वो डार्क क्लाउड चला गया, एक Hmm. बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री आती है। Hmm. स्पेशली आप जब सिटी के अगेंस्ट खेलना चाहते हो, एक सिटी अभी एक घायल शेर रहेगा, दो अलग Hmm. घायल शेर, एक लिवरपूल, ब्राइटन और सिटी, ये तीन घायल शेर है अगले गेम वीक Yeah. में। Yeah. Yeah. उसमें से एक सिटी डेफिनेटली विल ट्राई टू बाउंस बैक अगेंस्ट यू। Mm-hmm. How do you make off your start so far? Of course, we expected Arsenal to do well, right? Hmm. Uh, शायद ये बॉर्नमथ गेम के पहले मैं सोच रहा था कि शायद आर्सेनल बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंजरीज शायद मैच ड्रॉ करेगी, Hmm. हार भी Hmm. सकती है, बट नाउ यू हैव योर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड बैक, राइट? Yeah. So, एंड दैट huh. Hmm. सिटी लूजिंग जस्ट एड सो मच वैल्यू नाउ टू दैट फिक्चर, Hmm. क्योंकि अगर सिटी नहीं हारती तो फिर भी 4 पॉइंट का डिफरेंस होता, दैट वुड हैव गॉन like to 1 point only. Yeah. Now, if you win against Arsenal, win against City, Then you you go can top reach of the out. table, Yeah. and that probably helps us because goal difference pe we go top of the table Yeah. Yeah. because we are playing Luton before anybody else. I mean, True. it's the first fixture on Saturday. Yeah. Yeah. So, how important now that this City game has become for you, man? And what do you think that will Hmm. will change? Like, how Arteta would like to, or as an Arsenal fan, you would like to what Hmm. like Arteta to plan for this game? Yeah. So for me, I'll just review this City fixture by simply saying कि देखो, a good CDM makes a world of a difference in a team. ये जो भी Yeah, वीकेंड पे दो टीम्स हारी हैं, सिटी एंड ब्राइटन, yeah, they both lack one common thing, which is they City were missing Rodri, definitely. KDB तो yeah, of course करेंगे, but they were missing Rodri number one, and काइसेडो एंड मैकालिस्टर जाना कहीं ना कहीं ब्राइटन को चुभेगा, एंड वो उनको चुभने लग रहा है. yeah, This Beleba guy can probably do what Caicedo does, but it will take some time um, for Brighton to have that. But a CDM is a very crucial part of the team for everyone. For you guys, yeah, it's Bissouma, yeah, right? The reason there was an entire मेरा mood off इसलिए हो गया था because not only did we miss Partey, who is our CDM, राइस की इंजरी न्यूज आ गई, and I was like, yeah, दो सीडीएम्स चले गए भाई, दो सीडीएम्स चले गए, प्लस yeah, जॉर्जिनो ने जो स्पर्स को गोल गिफ्ट कर दिया था उसके बाद तो आई वाज नॉट लाइक टू हॉट ऑन yeah, जॉर्जिनो एनीवे. yeah, So I was like, two CDMs have gone, two left wingers have gone, so our entire left flank is destroyed unless we play Reece Nelson, Joe. I don't think Arteta fully trusts him. So Trossard, Martinelli gone, two very different profiles of left wing. yeah, And Trossard का तो चैंपियंस लीग में अच्छा गेम भी था, very assisted one and he scored one. He was on the streak of 2 goals, 1 assist in 2 games. ठीक yeah, है. And then साका के ऊपर इंजरी आ गई, सो योर स्टार प्लेयर इज आल्सो गॉन. सो yeah, इट्स तो आपका राइट विंग भी चला गया. टिम्बर जिसके लिए हमने पूरा सिस्टम बिल्ड किया था, ही इज आउट विद एन ACL. मैं लाइक हो क्या रहा है, सलीबा की इंजरी ये न्यूज आ गई. सो व्हाट इज इट नाउ, इज इट जस्ट गोइंग टू बी टोमियासु, बेन वाइट, Gabriel, Zinchenko, whatever, and that's just 4 defenders we have. We don't even have Rob yeah, Holding anymore. yeah, एंड आई वाज लाइक ये तो चलो बॉर्नमथ के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम उधर जीत भी गए. वी हैव टू गो टू लेंस अवे. ठीक है, चैंपियंस लीग में अभी वेंसडे को गेम है पहले हमारा चैंपियंस लीग में. देन यू मीट सिटी, उसके बाद दीज 4 डिफेंडर्स आर नॉट गोइंग टू डू इट, एंड अगर तब तक वो लोग वापस आ भी गए, आई डोंट नो हाउ दे विल परफॉर्म एंड एवरीथिंग. सो व्हेन yeah. आई सॉ दैट टीम न्यूज़ आई वाज लाइक दिस गाय इज अ पैथोलॉजिकल लायर. ठीक है, आई वाज लाइक ये मैनेजर एक नंबर का झूठा मक्कार है. इसने मेरे 2 दिन जिंदगी के खराब कर दिए इस सोच में कि यार मेरे पास तो टीम के पास प्लेयर ही नहीं है, हम पिल विल जाएंगे. And then you see Rice starting and playing so well. Then you see Saliba playing so well. ठीक है, and I was like, भाई मतलब what the hell. Um, but then a bad thing which happened in the Bournemouth game by Sujan. Bad thing Bye, which all the happened in the best. Bournemouth game was that Saka came off injured again. The same injury which he picked up against Spurs उस पे वापस हो गई. And I got really mad at Arteta during my watch long. I was like, it's criminal what he's doing because the guy's Yeah, hobbling off the pitch and you're up yeah, 3-0. अब तो बिठा दो बच्चे को. Was very frustrating. And अगर हम चैंपियंस लीग में विदाउट साका हम खेलेंगे, it's all on Arteta in the hopes that we can have him fit for City. But good news, everyone is training, including Saka. Partey is back in training, so that is good. I think he might get some minutes against Lens because if Partey is back, if Saka is fitter, if Jesus is there, if Havertz is there, if Rice is there, I think we will play a similar setup that we played against City in the Community Shield. yeah, And as much as we would try to win,
against City, our number one priority will be to not lose against City. Because Haaland is a monster, Bernardo is a monster, Julian Alvarez Alvarez. is in a crazy streak of form. Doku is a tricky customer. Doku versus Zinchenko, I don't even want to think about it. Um, Stones is back for City, so he can all you can. We've already seen him progress the ball from centre back. I don't mind. I don't think he will have any problem playing that CDM role. It's going to be much better than Calvin Phillips for sure. ठीक है, नॉट टू मेंशन रूबिन डियास, ग्वार्डियोल, एडिसन, वॉकर. अगर हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं है बिकॉज मार्टिनेली इज स्टिल आउट. If Martinelli is not there and if it's some other left winger, then Walker will कच्चा खा जाएगा उनको यार. Walker तो है ही ऐसे. So City are not as in as big a trouble जैसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. Of course, Rodri not being there is a big miss. Big miss. Yeah. But I will still say they are a very formidable side. And I think for me, we have to prepare to definitely not lose this game against City. Um, it seems like the perfect game for Erling Haaland to break all shackles and score a hat trick. I can already envision that in my head. But getting a result, Dick, right now I am not concerned who is staying at the top of the table. ये last season ने Too मुझे early. सिखा दिया. Right now it's not the business end. Yeah. इट्स नॉट द एंड दैट राइट नाउ मैटर्स कि टॉप ऑफ द टेबल पे कौन रहता है. एंड में रहेंगे, एंड में देखते हैं टुवर्ड्स द लास्ट 5-7 गेम वीक्स में whoever's at top, then I'll start caring a little more. Right now it doesn't really matter if we end up in the international break top, if City end up in the international break top, if Spurs end up in the international break top. Yeah, I would love to be on top because of course it's a points advantage or a goal difference advantage or falana dhimkana. But for me it's more of a thing कि हमने सिटी को अभी सिर्फ कम्युनिटी शील्ड पे पेनल्टीज पे रहा है. I'd love to beat them in a game. It's been far too long since we've beaten City Yep. in the Premier League. So I'd want that psychological juju off us कि हम सिटी को हरा दें. And I hope we are a little smart with our playing. Last season we weren't brave when we played them, and उसको ही rectify करना है for me. तो देखते हैं यार क्या होता है. For me, as long as the players are back, I want Martinelli back. I want us to play our strongest 11 versus City, and I want us to, if City are not at the strongest, which I don't agree with the assessment at all, City are still a very strong team. Pep Guardiola is there's a reason he's one of the best managers in the world, man. The guy won the league without a striker. ठीक है, हम यहाँ कहते हैं हमारा स्ट्राइकर तो क्लिनिकल नहीं है, हमारा स्ट्राइकर तो ये नहीं है, वो नहीं. ही वन विदाउट अ स्ट्राइकर भाई लोग. So he is Pep Guardiola, and I just want to beat him once. It's been too long. Just want to beat Yeah. City once. Beat them with 1-0, beat them with 2-1, beat them with 5-0. Don't care. Just beat them. Just beat them. And at the very least, don't lose to them. Um, because I think Harna will do a lot of damage psychologically because we'll be like, यार हम अभी भी सिटी को नहीं हरा पा रहे. अगर अब नहीं हराएंगे सिटी को तो कब हराएंगे टाइप्स. तो that's something I really don't uh, I'm not it's a psychological blow I'm not willing to take, which is why I hope our squad management is really good जब हम वेंसडे को खेलेंगे. चैंपियंस लीग में हमारे पास क्वेश्चन है. वी आर ऑन 3 पॉइंट्स, द नेक्स्ट 2 टीम्स आर ऑन 1 पॉइंट, एंड जिसको हमने रहा था देर ऑन 0 पॉइंट्स. इवन इफ वी गो विद अ स्लाइटली वीकेंड लाइनअप, I don't, it doesn't matter to me. It's fine, I can take it. Lens है, away है, I think we have enough quality. Or if you're playing a strong lineup on Wednesday, go up 2-0, play haram ball, उसके बाद take off all your players for City, man. Take it off because that's how City manage it. कितनी बार हालैंड ने 2 गोल मारने के बाद हालैंड को उतार लिया था वापस. Grealish will not see the team for a while, but the second he comes on, you can bet your ass that he will be super motivated to make an impact. This is what rotation is, and Arteta needs to improve his rotation a lot. Yeah. So Yeah. yeah, right now doesn't really matter to me who goes into international break on top. I would love it if it's us. If it's not us, doesn't really matter. I just don't want to lose to City. बराबरी कर लो, stay within 1 point of them, or beat them and leapfrog 2 points ahead, and that's more than enough for me. Because I Yeah. think you have to play this tactically. अभी जो links आ रहे हैं आर्सेनल के with Pedro Neto, with Ivan Toney, and some other guy also, I think मैं भूल गया तीसरा नाम, but 3 links आ रहे हैं for January. um, गेही, मार्क गेही. आज सडनली पता नहीं कहाँ से कैल्विन फिलिप्स का लिंक आ गया, which I don't believe. The guy who is the source sounds like a Mexican restaurant, so I'm not believing that.
But Mark Gehi, Pedro Neto, and Ivan Toney are solid additions to a squad जो distance जाना चाहते हैं. But distance जाने के लिए you have to be within touching distance. So you take any advantage of any slip ups यार. And मैं वही कह रहा हूँ कि nobody expected City to lose to Wolves. ठीक है, if we are just within the touching distance or if you're just ahead of City and they just drop points to, I don't know, maybe a Brighton, maybe an Aston Villa or something like that, um, we just have to go without a loss and we have to be in the touching distance ताकि जब City slip up करे you take advantage of it. That's it. Peak at the right time, man. Peak at the right time. Yeah, yeah. I agree, Daksh. Hmm. सिटी जैसी टीम है जिसको you always have to be on their heels Hmm. throughout the season. अगर Hmm. आप कहीं पे भी आप स्लिप करते हो, of course City is also going to slip somewhere. Hmm. बट आप अगर तब सिटी से इतने दूर रहो कि आप शायद उस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाते हो, Yeah. देन द टाइटल इज लॉन्ग गॉन, राइट? Yeah. Yeah. जैसे In fact, I would say that अगर हम इस गेम में भी जाते ना with 4 points behind City, कि even beating them would not have made a difference. I would be much less invested in this game. अब जैसे like you said, them losing made it a lot more interesting. Sorry, मेरे को बस ये point लाना था बीच में. या नो नो नो, आई एग्री. Hmm. अगर ये अगर वो जीत जाते ये गेम Hmm. अगेंस्ट वुल्व्स, 4 पॉइंट का डिफरेंस है. तब अगर हार जाते हैं तो आई थिंक तब ज्यादा डिफिकल्ट होता आपको. 7 पॉइंट Hmm. का डिफरेंस होता है तब. 7 एंड is देन beyond. I've said 4 to 6 is the only 4 to 6 is the यस, only margin you can stay behind City. या The second you go beyond 6, एंड it's over. यस, तो देन पोटेंशियल ये 6 पॉइंटर जो हम कहते हैं हमेशा, Hmm. वो एक्चुअल बहुत बड़ा 6 पॉइंटर बन जाता है. Yeah. अभी आपका ऐसा है कि अगर आप हारते भी हो तो भी एक 4 पॉइंट का डिफरेंस रहता है. अगर ड्रॉ होता है तो बहुत ही अच्छा है आपके Hmm. लिए, दोनों टीम्स के लिए, सिटी आर्सेनल दोनों Hmm. टीम्स के लिए अच्छा है. 1 पॉइंट का डिफरेंस बरकरार रखते हैं. और स्पर्स के लिए बेस्ट है. स्पर्स के लिए तो बेस्ट है, क्यों? बट अगेन ल्यूटन को हराना है सबसे पहले, तो ये है. अगर आप Hmm. ल्यूटन को हरा सकते हो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है. बट सडनली थिंग्स आर लुकिंग सो पॉजिटिव अराउंड स्पर्स के अगले 3 फिक्सर्स जो है, हम खेल रहे हैं ल्यूटन, देन फुलहम, देन क्रिस्टल, फिर चेल्सी के साथ खेल रहे हैं हम. Very, very good अगले fixture. तीनों गेम्स अगले तीनों गेम्स विनेबल है, राइट? Hmm. तो एटलीस्ट ऑन पेपर विनेबल है. फुलहम Yeah. ने हमको लीग कप में हरा दिया है ऑलरेडी, Hmm. पर उसके And any बाद team can beat any team, and Wolves versus यस, City is the biggest example. यस, You एग्जैक्टली. just don't know कि कभी bro हम on paper की बात करते हैं. If let's say somebody is playing a back pass and let's say Romero slip हो गया and somehow या Andres Pereira is through and that's it. It just takes one moment to get all these things. But yeah, या winnable on paper and for sure. sometimes you're Very just easy not fixture. there as Yeah, collectively. Sometimes your team just doesn't turn up, right? VAR uh, sometimes just VAR changes the या game. या 38 गेम्स में ऐसा होने वाला है आपके साथ कि आप शायद 2 वीक्स कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली टर्न अप नहीं हो पाते हो. Hmm. आपके जो भी टैक्टिक्स है आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हो, राइट? Hmm. तो क्या हम पक्का जीतेंगे ल्यूटन, फुलहम और क्रिस्टल पैलेस के साथ? नहीं. Hmm. जीत सकते हैं, दैट्स द थिंग, राइट? Hmm. जैसे पहले अगर हम लिवरपूल आर्सेनल, फॉर एग्जांपल आर्सेनल अवे, हम सोचते भी नहीं थे कि हम जीत सकते हैं, Hmm. क्योंकि टीम वैसे थी नहीं कभी, एटलीस्ट इन द लास्ट 3-4 सीजंस, Hmm. राइट? Mhm. एंड आर्सेनल वर गेटिंग बेटर एंड बेटर. तो ये जो एक थॉट होता था कि हम डेफिनेटली जीत सकते हैं, ये कभी था नहीं. Hmm. At least now I know कि we can blow off teams like Luton, we can blow off teams like, because Luton I know कि uh, they have come up, they have just beaten Everton now, right? उनका स्टार्ट बहुत ही खराब रहा है, so Hmm. they have to get some points here and there, Yeah. right? Yeah. And it's not as if they're just going to sit back for the whole 90 minutes and just wait for a good moment to capitalize. I think Hmm. we will be able to find enough holes in their system. Yeah. चेल्सी ने जब ल्यूटन के साथ खेला है तब आराम से हराया उनको, आराम से, Hmm. राइट? Mhm. तो वो ऐसे भी नहीं खेलने वाले कि लाइक एक इम्पेनिट्रेबल डिफेंस है उनका जो शॉन डाइक के बर्नली जैसे होता था. Hmm. मुझे ल्यूटन वैसी टीम नहीं लग रही है, तो ल्यूटन को तो Hmm. हराना शायद इजी हो जाएगा. फुलहम क्रिस्टल पैलेस के हम बाद में बात करेंगे. Hmm. क्रिस्टल पैलेस से याद आता है यार, हम क्विकली विल जस्ट टॉक अबाउट द यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस गेम. Hmm. आई सॉ द हाइलाइट्स, आई कुडंट सी द गेम. Oh, I made the decision to watch the entire game. और आई मीन आई फील सॉरी फॉर यू नाउ. पर
whatever I saw in that thing, right? There were times जब यूनाइटेड ने आई थिंक कुछ चांसेस क्रिएट किए थे, बट दे वर नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल, राइट? Mm. वीकेस्ट लिंक अगेन, जितना मैंने हाइलाइट्स में देखा, मुझे रैशफोर्ड के वीक लिंक अगेन एंड अगेन दिखाई दे रहे हैं। Mm. मैं मेरा पॉइंट बताने से पहले आई विल आस्क यू दैट व्हाट डू यू फील अबाउट दिस यूनाइटेड, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? क्योंकि हम ये कंटिन्यूअसली बोलते आ रहे हैं, क्या एरिक टेन हाग की Where सिस्टम is क्या the है? problem with United? Yeah. या एरिक टेन हाग की सिस्टम दिखाई, मतलब क्या हमें वो ग्लिम्सेस भी Mm. दिखाई दे रहे हैं कि एरिक टेन हाग ऐसे खेलना चाहता है? Mm. Uh, just a second. There are a few people who are asking for my Instagram ID. Man, I will share my Instagram ID. Generally, I use my Instagram for very personal uses. Mm. But I will soon create one Southstand View ka Instagram ID, and people Solid. can then start following me there so that we can Mm. have some conversations there directly. अगर आप Twitter Mhm. पे हो तो आप ट्विटर पे मुझे अलोक अंडरस्कोर टीटी Mm. आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माय डीएम्स एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. Mhm. There was another question about, when does the membership start? YouTube takes a while for the membership and the super chat, etc. Uh, for Oh the channel to yeah. start. Did you get the Yeah, watch time? हो गया? almost there, almost there. It's Nice. it's 2.7K now. It starts at Woo! 3K. सो जब 3,000 वॉच आवर्स हो जाते हैं किसी चैनल के, उसके Mm. बाद सुपर चैट्स और मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है. तो Mm. आई एम जस्ट 400 वॉच आवर्स बिहाइंड दैट नाउ. आई थिंक ये लाइव स्ट्रीम के बाद और जो मैंने यूट्यूब का, मतलब कल का जो वीडियो डाला है, आई थिंक ये वीक में वो 3,000 का आंकड़ा कंप्लीट Mm. हो जाएगा. उसके Let's बाद एक रिव्यू go. होता है, और आई थिंक 1-2 हफ्ते के बाद दे विल अलाउ द मेंबरशिप्स Yes. एंड द सुपर Takes a चैट week. टू. Takes a week. हाँ. या तो आई थिंक फुलम के गेम से पहले मेरे ख्याल से हम सुपर चैट्स अलाउ करना स्टार्ट कर देंगे, एक मेंबरशिप भी स्टार्ट कर देंगे, सो दैट मोर ऑफ योर कमेंट्स हियर कैन बी हर्ड. क्योंकि बहुत Mm. टाइम ऐसे होता है कि इतने सारे कमेंट्स में कुछ कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है, Yeah. बट डेफिनेटली विल स्टार्ट दैट सून, राइट? Mhm. Mhm. बट कमिंग बैक टू द मेन थिंग, मुझे एरिक टेन हाग का, मतलब क्वेश्चन ये था कि क्या एरिक टेन हाग की एक सिस्टम हमें दिख रही है फर्स्टली? Mm. क्या प्लेयर्स एरिक टेन हाग और इस बैच के लिए खेलना चाहते हैं? क्या दिख रहा है Mm. वो, राइट? Mhm. एंड लास्टली, डू यू थिंक देयर ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स with respect to Sancho, with respect to Anthony, is this something that is affecting their on field performances? I mean, I watched the game and I'll tell you this honestly. यार, United aren't that bad, dude. Uh, they are just playing players in positions they're not supposed to play. I think Amrabat at left back is a makeshift option. It's like Partey at right back for us. It works, but it's not ideal. Yeah, Same thing, I think. Um, Rashford sometimes tries too much. Sometimes he makes the wrong decisions. Hoyland, I think, is very good. Bruno, I think, is a great player, but that when things aren't going his way, मेरे हिसाब से ब्रूनो भी थोड़ा सा फॉल्टर कर जाता है. राइट विंग पे एंटनी अभी आ जाएगा, बट पेलेस्ट्री आई डोंट थिंक ही इज रेडी फॉर द बिग टाइम राइट नाउ. सब लोग पेलेस्ट्री 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 कर रहे थे. yeah, दे नॉट दैट बैड यार आलोक, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक माउंट का आना, जब एमराबाट मिडफील्ड में आएगा, आई थिंक दैट विल चेंज अ लॉट. आई थिंक टिल नाउ, आई थिंक जो भी यूनाइटेड फैंस का गुस्सा है ना तेरे को जो ऑनलाइन दिख रहा है, इट्स नॉट yeah, जस्ट अगेंस्ट द पैलेस गेम. आई थिंक इफ यूनाइटेड हैड वन प्रीटी मच ऑल देयर गेम्स एंड दे लॉस्ट टू पैलेस, they'd be fine. They'd be like, ठीक है, ये हो गया वो हो गया. अभी ना ये सारा क्यूमुलेट हो चुका है. It's a yeah, cumulative anger from every game. They've either dropped points or uh, not won or anything. And I think, yes, there is a Ten Hag identity wali thing, but I don't think you can construct an identity with an incomplete set of players. Now they've lost Lisandro Martinez for 2 to 3 months. Before 2 game weeks, Varane wasn't there anyway. They had to bring in Johnny Evans and Harry Maguire to do their stuff. Onana, I think, is a game changer, but again, now his squad isn't capable of fielding Onana's biggest strengths. जो I think मेरे हिसाब से आते हैं जब Varane and Lisandro Martinez will be back and Luke Shaw's at left back and one of Dalot and Van Bissaka are at right back. Amrabat and Casemiro in midfield, Bruno उनके आगे, या फिर even if you want to put Amrabat and Mount and Bruno साथ में, fine, fair enough. Anthony on the right, Rashford on the left, Hoyland. It's a very
मैं कोई डिल्यूजन होने की भाई मेरा क्या जाता है, मैं तो खुश होता जब यूनाइटेड हारती है। बट रखते हैं, टू बी ऑनेस्ट यूनाइटेड आर्ट बैड यार, यू गाइस आर क्रिएटिंग, इट्स जस्ट नॉट फिनिशिंग अगेन। अगर किसी कोई यूनाइटेड फैन है जो पैलेस गेम देखा पूरी तरह से, देयर वाज Yeah, अ मोमेंट वेयर हॉयलैंड हैड अ क्लियर साइट ऑफ गोल, ही स्लिप्ड, मिस किक्ड, डिड नॉट हिट द बॉल, बॉल yeah, क्लियर हो गई। ठीक है, वो हैंडबॉल वाला डिसीजन एक दिन किसी और दूसरी डायरेक्शन में चले जाता। आर यूनाइटेड द बेस्ट? No, not at all. Definitely not a team which will challenge for the title. Very मुश्किल से they will be in the top 5. I think at this form, अगर यही players चलते रहे जैसे next 3 months तक, if you play this football, definitely not top 5, because I will say there are other teams who can do a little better than you right now. I think yeah, Liverpool, Spurs, Arsenal, City. Liverpool, Spurs, Arsenal, City are 4 teams अभी तक। ठीक है, अब या इसमें who पांचवी have अगर who मैं have कहता हूँ, shown, या जिन्होंने एटलीस्ट पोटेंशियल दिखा है कि वो टॉप या 4 के लिए फाइट कर सकते हैं डेफिनेटली। या राइट, सिटी तो अलग लेवल पे है, सिटी का हम तो हाँ बात ही नहीं करते। या बट एटलीस्ट आर्सेनल, लिवरपूल और टॉटनहम ऐसे अभी हिसाब से दिख रहे हैं कि दे विल डेफिनेटली इन द मिक्स ऑफ टॉप 4, राइट। हम्म यूनाइटेड, लाइक यू राइटली सेड, मुझे लग नहीं रहा है कि वो इतना कंफर्टेबली आ सकते हैं टॉप 4 टॉप 5 में, हम्म, बिकॉज जिस तरह से स्टार्टिंग का फॉर्म रहा है उन्होंने खुद के लिए चीजें डिफिकल्ट कर दी है। दे आर येट या टू प्ले बिगर टीम्स लाइक Bro, look सिटी, at that goal लिवरपूल। difference. Okay, I'm या just saying, look at the top teams का goal difference, ठीक है? मैं अभी या अपना मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है? ऊपर या फर्स्ट फर्स्ट से चल, ठीक है? सिटी आर ऑन +12, आर्सेनल एंड या टॉटनहम आर ऑन +9, लिवरपूल +9, विला +7, ब्राइटन +5, वेस्ट हैम चल ठीक है, इज एन आउटलायर, न्यूकासल +11। अब वो बिकॉज ऑफ दैट 8th के वन गेम बाद ओनली। लुक एट द ड्रॉप इन द जीडी मैन, it's या 0, -4, -2, -5, 0. This is their form right now. This is या 8th and below form. या And that's the thing. ये तो न्यूकासल का तो तेरे को फिक्सचर्स भी पता है, they've played City, they've played Liverpool already, लिवरपूल। they've had a very tough fixtures. यस, Yeah, and Newcastle will rise now. Newcastle को तुम देखना, they'll zoom up the table in the next 3-4 weeks. यस, But डेफिनेटली। look at all, apart from Chelsea, who I think is an outlier in that GD या wala thing, -1 है या because they defend well, they just can't या score. या -4 GD after 7 games is horrible, bro. या 9 points after 7 games is bad. And chalo, 9 points after 7 game you can attribute to fixtures difficulties, or जैसे Chelsea का they just can't score. United concede a lot. That's the problem. या Sometimes they'll concede wonder goals जैसे उन्होंने पैलेस के अगेंस्ट किया है, ठीक है? समटाइम्स दे विल कंसीड स्टूपिड स्टूपिड गोल्स, बट -4 जीडी इस लेवल पे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बुरा है। इट्स फॉर मी राइट नाउ, इन अभी 7 हफ्ते हुए हैं, इफ बाय गेम वीक 12 they don't improve their points tally, they don't improve their GD, I think it's going to be a long season, because top 5, it'll just get to that point after in 5 more game weeks, मेरे हिसाब से 5 to 6 more game weeks, it'll just get to that point where अभी ना धीरे धीरे, राइट नाउ टाइटल इज आउट ऑफ देयर हैंड, मे बी टॉप 2 इज डेफिनेटली आउट ऑफ देयर हैंड, 3 by some miracle like which happened last season could also happen, but the longer this continues, 3 is out of their hand, 4th is out of their hand. So as and when the season goes on, मेरे हिसाब से, and just the fact that they are missing key players, पहले माउंट इंजर्ड आया, माउंट इंजर्ड हो गया, हॉयलैंड इंजर्ड आया, आमराबाट इंजर्ड आया, वरान इंजर हो गया, या अब मार्टिनेज इंजर हो गया, ठीक है, दे डोंट हैव डेप्थ एट स्ट्राइकर, हॉयलैंड के बाद कौन है, एंथनी मार्शल हु हिमसेल्फ गेट्स इंजर्ड अ लॉट, एंटनी एंड सैंचो, two right wingers or whatever, two wingers they can't really deploy, Mason Greenwood out of the club for good reasons and stuff. So they just have a very severe lack of personnel, and I don't think you can create a Ten Hag identity when he just does not have the players to implement that identity right now. They're या not that bad. They can eke out those 1-0, 2-0, 2-1 wins. It's just right now everything is going wrong for them. बंदे या स्लिप कर रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, कीपर सेव कर रहे हैं, उनका कीपर गलतियां कर रहा है, लाइक you could have anybody, you could have a combination of 4 managers managing Man United right now, and some of the saves that Onana has made, they would not be able to coach it out of him. United की सबसे बड़ी vulnerability लग रही है set pieces. You can target set pieces for United night and day. They can't convert from set pieces, but they definitely can't defend them either. या Uh, and it's just that, man. Too many players on too high wages. Um,
and all They of can't them are move them out now. underperforming right now. Yeah, All they of them. can't move them out because of that. Yeah. This is why this entire argument जब यूनाइटेड फैंस कहते हैं कि मगवायर को क्यों नहीं बेचा, मगवायर क्यों नहीं जा रहा है, भाई यू पे हिम सो मच मनी, ही इज गोइंग टू लुक फॉर कंपेरेबल मनी एट अनदर क्लब एंड नो अदर क्लब विल पे दैट मनी. Yeah. तो this is for him, he's not only looking for a sporting decisions out but he's also looking for a financial decision. अगर आप कह रहे हो कि भाई अगर तू 100K पे, अब तू 25K पे जा वेस्ट हैम पे खेलने के लिए, कोई नहीं करेगा भाई, जिंदगी भी होती है लोगों की फुटबॉल के बाहर. Yeah, एंड yeah. सेइंग कि मगवायर इज नॉट सीरियस अबाउट हिज करियर एंड एवरीथिंग, ब्रो, मतलब द कोई गाय भी वो क्यों करेगा, कोई भी क्यों करेगा. आप कॉमन सेंस आपके, तो छोड़ो अगर यार. हम हमारे पर्सनल लाइफ की भी अगर बात करो, या अगर आपको पता है कि आपको एक कंपनी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जहाँ पे आपको किसी भी हालत में निकाल नहीं सकते, हम्म अगर उनको निकालना पड़े तो आपको बचे हुए जितने भी साल बचते हैं हम्म उसका सारा पैसा आपको देना पड़ेगा, राइट. या व्हाई वुड यू लीव द कंपनी मैन, जब आपको या पता है जब आप जहाँ पे आप नेक्स्ट जाने वाले हो, जहाँ पे आपको कम सैलरी मिलेगी. हम्म ओके, यू विल प्रोबब्ली टेक द लेस सैलरी अगर आपको आपकी कंपनी कंपनी वो पे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर बाय देते हैं करके ले पूरा, लेती है. which I वो think बोलते हैं United ठीक should है. have done. They should have हाँ, paid Maguire off. I think they कि should have paid him आपका off. पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम पे ऑफ कर लेते हैं, आपको इकट्ठा हम्म इतना पैसा आ जाता है, दो हम्म तीन साल का जितना भी बचा हुआ है आपको सारा पैसा आ जाता है उसका इकट्ठा. हम्म उसके बाद आप कहीं और कम सैलरी में काम करना शुरू कर दो, ठीक है. हम्म उस हिसाब में it makes sense for you to then take a lesser salary because you've already been paid off for the next 3 years, whatever's हम्म left, for example like 2 years in this particular case, you have already been paid off for that those so many years. Now you can definitely take a job for a lower salary, you are getting paid yeah extra now, right. yeah yeah. If United aren't willing to pay severance also and they're saying bhai tu nikal, Yeah, and he says fine I will go, but as long as I get a comparable salary, if you're not giving me severance, fine, whatever. But United, you just can't. You've offered Rashford itne wages. Let's say you want to remove Rashford from the team, who will pay Rashford itna money? yeah, what is Unless on 300k, 250k Matt, even if I Rashford. say it's 275K, his Yeah, performances. तो क्या है? The problem is this. I was watching you Nidhi Divyansh yesterday also. जब yeah, निधि भाई कह रहे थे कि गोल्स कौन मारता है, रैशफोर्ड ने 40 गोल मारे थे, 30 goals and 10, मतलब 40 goals assist थे टोटल उसके लास्ट सीजन. yeah, प्रॉब्लम इज, इफ यू कीप रैशफोर्ड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि बंदे की डिसीजन मेकिंग खराब हो गई. इफ यू रिमूव रैशफोर्ड, हु इज योर गोल स्कोरर? ये yeah, ये यही है ना. रिमूविंग रैशफोर्ड इज वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. हु कम्स इन? yeah, Who will replicate those 40 goals and assists? Bruno Fernandes? People are frustrated with him also. I like him as a player, but people are frustrated कि वो complain बहुत करता है, मोन बहुत करता है. Hoyland, he's just 20, bro. We have players who are 20 years of age in our teams. Do you expect them to be the main men in our team? I don't think so, yeah. no. So, yeah, not 20 years. not when you are trying to go for bigger things. आपके Yes. 20-21 साल के प्लेयर्स आप एज अ प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो Hmm. और आप उनके ऊपर बिल्ड कर सकते हो 2 साल अगले, करेक्ट. और Yeah. फिर उनको एक मैच्योरिटी आती है, उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है. साका की एग्जांपल हमने देखी हुई है. Hmm. नाउ ही इज एट अ लेवल जहाँ पे वो Hmm. ही विल फिट इन एनी टीम इन द लीग टुडे, प्रॉब्ली Mm-hmm. मोस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड टुडे. एंड ही कैन actually go for like Hmm. wherever he is right now, he can go for the titles, Champions League trophies, basically like big trophies I'm talking Hmm. about, not like League Hmm. Cup or FA Cup. Yeah. आप 20-21 साल के प्लेयर्स लेके आप पहले सीजन में, दूसरे सीजन में उनके आप टाइटल पे नहीं जा सकते. Hmm. आप वो आपका कोर नहीं हो सकता, is what I'm saying. आपका Yeah. core is always going to be the experienced players, Hmm. and these players will keep helping you out. जैसे हमने सिटी में फोडेन को देखा है, करेक्ट. उनका Hmm. कोर फिर भी वैसे ही था. फोडेन again is a generational player, Yeah. right? He fit into that team so well, and that's again Pep's genius, right? Hmm. जिसके वजह से होता है. जिंचेंको को हमने देखा है जब वो Hmm. आया था, when he broke through City's team. Hmm. उनका कोर कभी जिंचेंको के अराउंड नहीं था या फोडेन के Hmm. अराउंड नहीं था. Mm-hmm. These player aid and abet your main core, right? Yeah. Yeah. True. 100%. मुझे यूनाइटेड में प्रॉब्लम ये दिख रहा है, इफ यू आस्क मी, Hmm. लाइक यस, एक यहाँ पे एक कमेंट है कि यूनाइटेड वेंट फॉर अ लॉट ऑफ ओवरपेड एंड फ्लैशी प्लेयर्स. I यूनाइटेड, don't think United can take those risks, you know. I या, think बट United का, देखो मतलब मेरे को इतने डू साल नॉट हो गए. थिंक हाँ. डू नॉट थिंक दैट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू टेक अ रियलिटी चेक, वेयर यू थिंक दैट ओके, आई, जो भी हुआ है, ठीक है, वी हैव डन Hmm. सो वेल इन एलेक्स फर्ग्यूसन्स टाइम, वी हैव डन सो वेल
till 2011 2012. Yeah. वी हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स जहाँ पे हमने प्रूवन प्लेयर्स लाके देखे, हमने प्लेयर इब्राहिमोविच जैसे प्लेयर्स लाके देखे, हमने कावानी Mhm. जैसे प्लेयर्स Mhm. लाके देखे, Mm. हमने वरान, कैसेमीरो, हमने जोसे मोरिनो जैसे मैनेजर्स लाके देखे. Mm. If all of this is not working out for United for 13 years, 12 years straight, do you Mm. not think there comes a time when you have to take a reality check and say, okay, we'll try to change this now? ठीक है, हम ऐसे प्लेयर्स देखेंगे जहां पे हम सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैन, सिटी. सिटी फ्लैशी प्लेयर्स खरीदता है. सिटी का Mm. सबसे बड़ा साइनिंग अब तक ग्रिलिश और ये रहा हुआ है, मतलब ग्रिलिश ही रहा हुआ है मेरे ख्याल से, और हालैंड, राइट. ग्रिलिश एंड ग्वार्डियोल दोनों 100 मिलियन. ग्वार्डियोल, या उसके अलावा हालैंड की सिटी फीस के कम है साइनिंग्स बट देखो. उसकी वेजेस फीस ज्यादा है. कम है लेकिन उसके वेजेस और ये एजेंट फीस और ये सब में बहुत पैसा गया हुआ है, राइट. बहुत ये बहुत बहुत. प्लेयर्स ऐसे थे जहां पे जो ऑलरेडी प्रूवन है और उन्होंने लेके आए. ठीक है, Mm. केडीबी जब उन्होंने लाया तब जूरी वाज स्टिल आउट ऑन केडीबी, Mhm. राइट. ही डिड वेल इन बुंडेसलीगा बट Yeah. चेल्सी से निकाला गया था, बुंडेसलीगा में खेला, द जूरी वाज Mm. स्टिल आउट Mm. ऑन केडीबी, राइट. Yeah. Yeah. स्टोन्स को जब उन्होंने लाया तब ऑफ कोर्स पोटेंशियल बहुत था. सब बोल रहे थे कि 50 स्टोन्स मिलियन को आपने भाई 50 उसमें मिलियन में स्टोन्स क्यों के लिए. लिया. ठीक है, फर्स्ट सीजन स्टोन्स का बहुत खराब रहा है. फिर बहुत देखा है बेकार. हमने स्टोन्स उसके बाद ऊपर आता है, करेक्ट. हैव दे स्पेंट लाइक 70-80 मिलियन ऑन रैंडम प्लेयर्स? नो, Mm. राइट. अगर वो 80 मिलियन वाला, अगर वो 100 मिलियन वाला ग्रिलिश खरीदता है तो उसी साल वो 15 मिलियन वाला अकंजी भी खरीदता है. Yeah. And I think यही है डिफरेंस. देखो पता है, it's hyper focused recruitment. Again, pointing to what you guys were talking about yesterday. This whole thing about Neville saying the board should have not backed, मतलब not intervene करना चाहिए बोर्ड को, सिर्फ 10 हाथ के प्लेयर्स नहीं लेने चाहिए. भाई what the fuck? How else do you guide replace? How else do you guide recruitment? Either you go behind a manager or you go behind a sporting director who knows what you're talking about. For you guys, for a while, it was Paratici before his criminal cases. For us, it's Edu and Arteta as a team. For United, who is it? Murtaugh? No, he's a financial guy. The guy does not know jack about football. He can attract the big sponsors. You will see United ke players posing with a tractor, which is good for them, which is how they make money. But he does not know about football. And if there is no sporting director, then you just have to trust the manager and it's what you do. Ab, if you're overriding that decision, ठीक है, बट देन आप सैक तो सिर्फ भी मैनेजर को ही कर रहे हो फॉर योर Yeah, डिसीजंस एंड रिक्रूटमेंट. yeah, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट विद दिस स्ट्रैटेजी दे कैन एटलीस्ट होल्ड टेन हाग अकाउंटेबल कि ब्रो, हमने तो आपको आपके प्लेयर्स दिए हैं, अब आपकी क्या गलती है, व्हाट इज द एक्सक्यूज यू हैव, yeah, राइट. सो सिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस इज पेप कोचेस. He tells what the kind of player he wants, and the backroom staff, the board and everything, they all come together and give him the player. Now yeah, that player costs 15, that player costs 100. After a point of time, it doesn't matter to City will have a price in mind. If they wanted Declan Rice as badly as they wanted Guardiola, they would have gone for, you know, 100 million के beyond जाके आर्सेनल का बिड मैच कर लेते, उसको ओवरटेक कर लेते. But they didn't. They wanted Declan, just not as much as we wanted him, and that's fine. वही जैसे इताची कह रहे हैं, they have Chicky, who is yeah, a genius, who was there in Barcelona as well. Him, a Pep, and Andoni Zubizarreta. These three were absolutely crazy for Barca as well. जब वो बारसा के लिए रिक्रूटमेंट करते थे, and now at City as well, he is absolutely doing phenomenal work. United does not have that. They have a manager whose talent ID पे question उठते रहेंगे. People say Ajax में उसके पास इतने players थे. I will say Overmars, Van der Sar, all these guys were also a lot more involved when it came to Ajax की recruitment. And you see, चलो Overmars went away because of inappropriate behavior वाले allegations. Van der Sar is sick and everything. But yeah, the second anything creepy comes up or anything bad comes up in Ajax, the sporting director is fired. Who will fire Murtaugh? Glazers? They're not involved in the club. So for me, I will say right now they're just following a template कि Ten Hag को जो players चाहिए दो. But if things go bad, then we know who to blame, yeah, right? And as for why doesn't United get a reality check in the sense कि recruitment के मामलों में, I just think it's too big of a brand, bro. I think if your panic signing is a 5-time UCL winner in Casemiro, that is your panic signing. हमारी panic signings होती थी, Mertesacker ले लिया, Yossi Benayoun ले लिया, Mikel Arteta ले लिया. हमने These were our सिसोको panic लिया. signings.
हमने हाँ? सिसो को लिया है. Yeah, these are the level of our panic signings. They are getting Casemiro. ठीक No, है? but that's the thing. No, how long are you going to play for the optics? How long are you going to play for that? We are united and we can't go for these players, right? आई जस्ट थिंक अगर आप 10 साल से अगर आप एक यूनाइटेड फैन हो, हर साल आप गैरी नेवल से लेके पॉपुलर मीडिया से लेके ऑनलाइन फ्रॉम द क्लब देमसेल्व्स में भी ये सेंटिमेंट कर रहे हो कि बस 2 ट्रांसफर विंडोज और 2 ट्रांसफर विंडोज और एंड यूनाइटेड आर कांस्टेंट चैलेंजर्स ऑफ द प्रीमियर लीग. You take any season preview, United invariably in the media somehow they make it into the top 2 or top 3. Yeah, ठीक है, हर प्रिडिक्शन में हर प्रीव्यू में मैन यूनाइटेड आर गोना डू इट दिस ईयर, मैन यूनाइटेड आर गोना डू इट दिस ईयर, दे हैव yeah, एडेड फलाना प्लेयर, दे हैव वन फलाना ट्रॉफी, they will do it, and that is all I'm saying. United right now is not being run as a footballing institution, it's being run as a financial institution. It is being run as this big sink for advertiser money. yeah, ठीक है, एंड इसके लिए क्या करना है, आपको ब्रांड ऑप्टिक्स रखनी है, सो यू हैव टू साइन द बिग नेम प्लेयर्स. अभी yeah, हॉयलैंड आई थिंक इज स्मार्ट साइनिंग. आई मीन आई वुड हैव लव्ड हॉयलैंड एट आर्सेनल. ठीक है, हॉयलैंड इज अ ग्रेट साइनिंग आई विल से. एंटनी चलो ठीक है, यू नीड अ प्लेयर हु इज फेमिलियर विद द सिस्टम. वेंगर डिड इट विद पेटी वियरा एंड whoever was familiar with his system back then in France. So fine, Anthony is okay. Mount, dekhte hain what happens. I think Amrabat is a good signing for them as well. But somehow, yeah, they will have to do something about their recruitment. Garnacho will have to break through and overtake Rashford. Kobe Mino, if he does end up playing, then he has to do. Facundo Pellistri has to do a lot more. Hoylett, yeah, and that's the thing, because जैसे अभी आशुतोष ने बिल्कुल सही कहा है, once you start overpaying for players now, because everyone knows how desperate you are. yeah, They were after Frankie De Jong for a year and a half. They were after Sancho for a year. They were after Anthony for months, and they ended up finally paying whatever the asking price yeah, was. yeah, So that is why Atalanta, अगर Atalanta अभी Ajax को बेच रही होती, Hoyland 30-35 million का आता with yeah, some sell on clause or whatever. yeah, But it yeah. just because it's United tax is a real thing. Um, they will charge 65 and United will pay 65 because for Of course. United 65 is not an issue. And to be honest, logically, if I think about it, 65 for Hoyland, if you get, provided you get 10 good years from Rasmus Hoyland, he's 20 years of age. मैं कहता हूँ 28 तक भी खेल ले अच्छा वो. Over 8 years, you pay 65 million, considering inflation and everything, that's a solid price to pay. Yeah, definitely. But that 65 million in the immediate term will stop your recruitment in other areas. Right now, they don't have depth. Right now, they can't buy a winger. Right now, they're surrounded by FFP issues. तो मेरे सबसे बड़ा इशू यही है कि yes, over 8 years, Hoyland will pay off. But right now, it will stop you from recruiting the players that you really want. Really, and you especially like really want is other way you really need. Yeah, 100%. And yes, you rightly said United tax. आपके and there was one comment here कि does Ange has a better or a good talent ID? Definitely, man. आपने अगर एंज की रिक्रूटमेंट सेल्टिक में देखी होगी, योकोहामा में देखी होगी, जितने भी अगर आप लाइक देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस प्रेजेंट ऑन YouTube today where you can just go through it and you can understand where he comes from. Hmm. Sometimes you don't require Hmm. like an 80 million signing to to change the way you play. Sometimes you just Hmm. need the 30-35 million signings who are Yeah. definitely going to affect your game style. Exactly. Sometimes And you just need somebody who, like, we wanted Mudrik. Mudrik nahi aaya. Sure, it hurts. And we got Trossard. He's yeah, been absolutely amazing. yeah, 25 million, yeah, bro. 25 million right, for Trossard. Right now, if United need a winger, they should be all over Pedro Neto. Should be yeah, all over Pedro Neto. कितने लेगी Wolves? 35, 40? I don't yeah, know. They should be all over Pedro Neto. He's a good right winger who's getting back to his form. सबसे बड़ा कंसर्न था कि वो ACL के बाद क्या करेगा, बैक टू हिज बेस्ट. बट दे विल गो yeah, फॉर अ Chiesa who, big name, I understand, great quality, I understand, but will cost probably double of that. yeah, yeah. That's the problem. I think United. Hmm. I feel that they're still playing to the gallery. They are playing Hmm. for the optics कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड है और हमें ये साइनिंग्स एवरी ईयर लेके आनी पड़ेगी क्योंकि जो फैंस भी हैंग तभी खुश हाँ होते हैं. या ये फैंस को भी हैंगओवर यही जो चाहिए. निधि भाई कल बात कर रहे थे ना, दिस हम्म. हैंगओवर ऑफ क्लास ऑफ 93 यस. plus this hangover of we were so great at this, from this to this, we have
X amount of league titles. This whole thing ना, ये आर्सेनल के साथ भी इशू था. We are Arsenal भाई, we are Arsenal. We are this. Same thing. We are Manchester United. We are this. The ghosts of the past is keeping them down यार आलोक मेरे हिसाब से. Yeah, They're trying so desperately to match up to the past. They'll never be able to get into this new era. yeah, They're yeah. not looking to forge a new They're not identity. allowing, yeah, they're not allowing any manager to have a new era. They're not Hmm. allowing any Arteta, man. Took enough time. Sometimes you need that time, right? Arteta Hmm. first 2 seasons was so bad. I know so many Arsenal fans that are friends of mine today. They were Hmm. all Arteta out in the first 2-3 Mhm, seasons. mhm, I remember last year भी जब आपका मतलब उसके पहले वाले सीजन जब आपका टॉप 4 चला गया, टॉटनहम और आर्सेनल के बीच में टॉप 4 का जो एक रेस शुरू था hmm, और टॉटनहम को टॉप 4 मिल गया, तभी भी लोग hmm, आर्टेटा आउट बोल रहे थे. तभी भी hmm. लाइक इट्स एज अर्ली एज लाइक as late as probably a season and a half back, Yeah, correct? yeah. But suddenly you saw something clicking last season, right? Hmm, He had to take his time to weed out all the bad apples from the team, hmm, uh, establish his own system, establish his own style, and today hmm. we are seeing what Arsenal is, Yeah, looking right. yeah. आप कोई भी मैनेजर को अगर आपका डेडवुड निकालने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, अगर आप रूथलेस नहीं होते डेडवुड निकालने के लिए, तो आप हमेशा Hmm. सफर करोगे. Yeah. पोचेटिनो जब टॉटनहम में We. आया था तब उसको भी 2 Hmm, सीजन लगे बस डेडवुड निकालने के लिए, क्योंकि हमारे mhm. पास प्लेयर्स थे. एडेबायोर था, लेनन था, Yeah. डॉसन, कबूल, ये Hmm. प्लेयर्स जो थे हमारे पास, हमें पता था कि हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते अच्छा. Yeah. लकीली वॉकर एंड रोज स्टेप्ड अप, राइट? Yeah. बट तब तक रोज और वॉकर दोनों को भी लोग मतलब जब आई रिमेम्बर जब रोज को पोचेटिनो के फर्स्ट सीजन में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला था, तो पीपल वर फ्यूरियस ऑन ट्विटर, टॉटनहम Hmm. फैंस, कि रोज को कैसे मिल सकता है, ही इज Hmm. सच अ बैड प्लेयर. पर पोचेटिनो सॉ समथिंग इन देम, बोथ वॉकर एंड रोज, एंड दे स्टेप्ड Hmm. अप, करेक्ट? बाकी टीम्स, मतलब आपको एक मैनेजर को एक ट्रस्ट होना चाहिए, मैनेजर में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि ये प्लेयर्स को इंप्रूव कर सके. बट अगर कहीं कोई भी पॉइंट पे अगर आपको 1-2 साल के बाद दिखता है कि ये प्लेयर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको वो हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, Yeah. जो शायद आपको रैशफोर्ड के लिए अभी कभी ना कभी हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा. आप Exactly. कितने साल रैशफोर्ड के ऊपर नहीं नहीं आज ये सीजन अच्छा करके दिखाएगा, अगले सीजन And अच्छा same करके thing with दिखाएगा. us. Smith Rowe, Hale end से है, crowd favorite है and everything. We Yeah. all love him. I love the guy. I want him to succeed so bad. But if he's just not part of the plan, we'll have to move on. And Yeah, if he you turns had to out move good in on the Wilshere, future, man. yeah, Wilshere से आपको मतलब move on great करना talent, पड़ेगा. right? Yeah. One of the best young kids who came Hmm. to Arsenal, right? Yeah. I think he Yeah. won the PFA Young Player of the Season also, if I'm not wrong, Hmm. that season. Yeah. Suddenly injuries खराब कर दी उसको. Emery ने I बोल दिया think, कि you're not in my plan and then he left. That's it. yeah, Same thing. You and have to do it. he was as Arsenal as any Arsenal fan would be, Yeah. right? Yeah. I think one player that I absolutely hate from Arsenal is Wilshere, Hmm. because हमेशा he would like make something up, like a comment about Tottenham and all that, right? Hmm. So, but you had to take those decision, right? कि नहीं भाई Hmm. अभी और नहीं हम आपको खिला सकते, अब हो गया 8-10 साल आपको टाइम देके, Yeah. अब नहीं हो सकता अभी, राइट? Yeah. ये And कब होगा? yeah, यही सेम चीज हमें स्मिथ रो के साथ करनी पड़ेगी, नेल्सन के साथ करनी पड़ेगी. We've already done it with Balogun. We said, "Do you have patience?" He said, "No." Um, One question and for you, man. I हाँ, think वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हमने जब बात की थी हाँ. सिटी और आर्सेनल के बारे में, तो हमने टाइटल रेस के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर. आई डोंट थिंक, मेरा पॉइंट मैं पहले बताता हूँ. ऑफ कोर्स दक्ष विल गेट इनटू Yeah, दिस yeah. इन मोर डिटेल, बट आई डोंट थिंक आर्टेटा विल गेट अ सैक. Yeah. इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा हुआ है. आर्टेटा विल डेफिनेटली गेट, जो भी उसने लास्ट सीजन किया है उसके हिसाब से आर्टेटा विल गेट एटलीस्ट 2 more seasons, इंक्लूडिंग दिस, excluding this. So total 3 more seasons he will get to win these big trophies. Then probably Arsenal board will decide to, okay, कि Arteta से ये नहीं हो रहा है, we might probably need to get a better manager after that, right? But 3 seasons is the least that I see Arteta staying at Arsenal, if at all they don't win any good, like any big trophy. I'm not talking about League Cup or an FA Cup. I'm talking about like a Champions League or a league. Yeah. What do you think, man? Yep, similar view. I think PL title right now is a little too ahead of us. I would love to win it. I think Arteta को next 2 years में जीतना चाहिए the PL. This year, next year, or the latest the year after. But no, I am personally giving Arteta 2 years. I think that is enough time
for anything to make click to at least a very 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 serious challenge for the Premier League title. मतलब आप एक पॉइंट से हारे हो तो फिर आप तो अब कुछ नहीं कर सकते. But I still think next 2 years में Arteta might actually win it. But उससे पहले ना I think whether Arteta gets sacked or not depends on how we do in other competitions this year. First of all, the priority is not to slip out of top four, top Yeah. five, whatever. Not to slip out of Champions League position is the first priority. He does that. That is the bare minimum. अगर वो भी miss हो गया, then he's automatically sacked. He can't go to Europa League. अंडर द आई थिंक अगर ये सीजन वर्स्ट भी होता है कि अगर आप टॉप 5 से बाहर आते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, आई थिंक ही स्टिल गेट्स अनदर सीजन डेफिनेटली. I don't think so. I think he'll go. I think he'll go himself because ओके. right now मेरे हिसाब से he's gotten everything that the board asked him. From crazy signings to good signings. Of course, injuries are injuries, but that aside also. I don't think we'll slip out of top 5, but even if we do, the only thing which will save him is a deep UCL run. Right. If we go to the semis of the UCL, he is staying no matter what happens. If we go to the semis, he is staying. 100% he is staying. If we win a trophy, any trophy, League Cup, FA Cup, dono, he's staying. But I think his biggest agenda for this year has to be we have to win something. It has to be a trophy. He has to set a winning culture at the club. And that's it, bro. Ki, will he win the PL this season? I don't think so. Will he win it next year? I really, really hope so. Anyone's best chance of winning a trophy, the Premier League, is when Pep leaves, and I don't think Pep leaves. Uske baad bhi there will probably be Klopp because now he's suddenly re-energized with this new team and everything. Yeah, But Liverpool 2.0. Yeah, Liverpool 2.0 and all those jazz. तो मुझे लगता है कि yeah, for now, I think this year definitely Premier League is a little beyond us. We don't look as fluid. I think injuries is going to be a huge issue considering last season. Next season, I think our team will completely peak. And I think next season will be a strongest opportunity to win the title. This season, a deep UCL run plus one random trophy is good enough for me. I think he stays with that. There will be frustration if we come out of top 3, top 4. But a deep UCL run. If we somehow end up in the semis, yaar, Alok, जो बहुत मुश्किल in itself होने वाला है. If we somehow end up in the semis, which means we go through 3 knockout competitions, he'll stay for sure. Right. Yeah. So quickly, just like in 2 minutes, if you have like one name that can probably replace Arteta if he gets sacked this season, next season, season after that. Somebody like Nagelsmann, somebody like Luis Enrique. Okay. If we're talking ideals, yeah. Okay, I will have a list of managers. So ideally, I would want to replace Arteta. Number 1 would be Roberto De Zerbi. Right. I think he has progressive football. I think his brand of football will take the least amount of friction to adjust for our players. Right. I think he will already have the tool set to quickly integrate players like this. Yeah. Yeah. So number 1 would be Roberto De Zerbi. Yeah. Number 2, पर्टिकुलर ऑर्डर छोड़ दो. अब तो मैं एक अंडररेटेड गाय आर्ने स्लॉट, जो अभी एरिडीवीसी में है. Yes. We were trying for Arne Slot before we went for Postecoglou. So yeah. And if we want to go into like win now kind of guys, there's Hansi Flick, who could be there. I think Hansi Flick would be somebody I'd be looking towards as well. Or I would genuinely want to try for Ancelotti. I would genuinely want Ancelotti. You cannot get the most, मतलब उससे ज़्यादा winningest manager आपको नहीं मिल सकता. Right. I don't think Mourinho will make the whole Chelsea, United, Spurs, Arsenal. Mourinho will never be that. I don't think he'll come to Arsenal. And I think Mourinho's, and I think कल भी हम दिव्यांश के चैनल पे बात कर रहे थे. I think the game has gone by him now. Yeah, a little bit. I don't think that you can win titles with the tactics that Mourinho plays with. Like look at Roma this season. Mourinho का बताऊं, I don't think Mourinho has tactics per se, but I think Mourinho relies a lot more on strong-minded individuals who can drag the game by themselves.
which Yeah. is why I think he's very familiar. He needs a strong-headed characters यार, and ये बच्चों की टीम नहीं संभाल पाएगा वो भी Correct. मेरे हिसाब Yes. से. True. So True. yeah, for me, Deserby just because of the smoothness of the transition. Yeah. Um, Arne Slot, because if we have to go on another journey, I think Slot is a good guy. If Ten Hag gets sacked, I'll get Ten Hag. I will say Yeah. this right now. Ten Hag at Okay. Arsenal with the support Arteta is getting, if Ten Hag gets that side of support, he will cook. Hansi Flick and Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, if you want a winning now manager. If Yeah. not, then Roberto De Zerbi. Right. Yeah. सो एक्चुअली हमने ये 1 घंटे का स्ट्रीम डिसाइड किया था. बात करते-करते 1 घंटा 50 मिनट हो गए. Last, I think 10 minutes, I will Hmm. just talk. I think we should talk about the likes of Villa and Newcastle also. Joshua Yo, must be here. no There problem. are a few questions about Villa. Before Hmm. we just move to Newcastle and Villa, right? Hmm. I think Swap ने 2-3 बार सवाल पूछा. Your thoughts on our players sometimes miss passes, rushes during transition. Is it something to do with adapting to possession from counter attack, which we were playing since 3 years? I think एक हैंगओवर रहता है पुराने सिस्टम का, वो निकलते निकलते टाइम लग जाता है. आई एम डेफिनेटली आई एग्री विद दैट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट, आई थिंक, the instruction that we also have from Ant is that to move ball quickly. Hmm. When I say quickly, I don't mean that just bypass the midfield and the defense to like ping the ball or hoof ball जो बोलते हैं हम उस हिसाब से नहीं, but on the ground just move the ball quickly, try some risky passes. Hmm. Now, when you try such risky passes, you always like it's 50-50 then. I feel Hmm. sometimes they just work the best. But there Hmm. are times when you अगर एक 19-20 हो जाता है आपके passes में, अगर आप एक रोलिंग बॉल को स्पेशली जब आप पास करने की कोशिश करते हो, आपने एक सेकंड उसको अगर जल्दी या लेट हिट कर दिया तो द बॉल इज नेवर गोइंग टू गो टू द इंटेंडेड प्लेस. अगर आप आर्सेनल का जो गोल, फर्स्ट गोल जो था, आप देखो, कुलुसेव्स्की लॉस्ट द बॉल टू जिंचेंको बिकॉज ही गॉट द बॉल इन द राइट प्लेस. Hmm. He knew that there is absolutely no one in front of him on the other wing. I think वो central area में था तब कुलुसेव्स्की, almost towards the left wing उसने बॉल लिया, started Hmm. running towards the right wing. उसको दिख रहा था कि वहां पे कोई है नहीं. He still tried to make that pass or basically tried to beat Zinchenko. Right? Hmm. He could have just passed the ball back and we could have started building from there. एक कंपोजर जो लगता है, आई थिंक वो प्लेयर्स में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. Once that happens, though, I think we will see the best out of this system. Hmm. So it's a mixture of both. I think the hangover from the previous regime and the previous tactical style that we had, but it's also about now trying a few risky passes at all times. जो Yeah. फॉर एग्जांपल बिसुमा का आप देखोगे, कैसेमीरो को जब उसने वो बैकफ्लिप करके उसका जो नटमेग किया था, sometimes it works. अगर if Casemiro probably had read this a little early, then that pass is going to Casemiro's legs directly, और फिर वहां Hmm. से काउंटर बिल्ड होना शुरू हो जाता है. तो यू Hmm. ऑलवेज रिस्क विद दीज पासेस, राइट? तो मेरे ख्याल से ये एक है. Hmm. तो क्विकली दक्ष विल टॉक अबाउट विला, मैन. हम Hmm. एक्चुअली एक गेम से पहले जब हमारा एक छोटा, मतलब व्हेन वी जॉइंड दिस टीम, वी थॉट दैट विल स्पीक अबाउट विला एंड ब्राइटन गेम. But we spoke about the other games only so much. Hmm. Villa looks a different team, right? What do you think about Unai Emery, man? Do you think that Unai Emery को अगर चांस मिलता जो आर्टेटा को आज मिला है, जिस तरह से बैकिंग मिल रही है Yeah, yeah. आर्टेटा को, 100% he would have अगर wouldn't उनाई really एमरी give को it. वो बैकिंग अगर आर्सेनल से तब मिलती, Hmm. शायद ये प्रोजेक्ट को जो अब 5 साल लगे, शायद वो 3 साल में आज आर्सेनल आपको वहां पे दिखता जहां पे. We would have, we would have been a very different team for sure. Let's not forget Saka को debut Unai Emery ने दिया था Yeah, for the first time. So yeah, it's we would have been a very different team for sure. He knew how to use Smith Rowe. He knew how to use Aubameyang as well. yeah, But वही था यार. The board didn't back him properly. He wanted Zaha. We gave him Pepe. He wanted Anzonzi. I don't know what we gave him, but we gave him someone else, yeah, right? He wanted some other player. A lot of it was a hit and miss. yeah, मेरे हिसाब से when it came with Unai Emery and we went from a different, हमारे Unai Emery से पहले Wenger was the head of the table. Wenger was deciding everything else. yeah, yeah, But in his succession planning, the board decided कि देखो यार, um, हम ना इतने बड़े फिगर को जाने के बाद एक इतना पावर वैक्यूम में इतनी ज़्यादा पावर एक नए बंदे को नहीं दे सकते एट आवर क्लब.
So we'll Yeah. go for the continental model, which is we don't have a manager, we have a head coach. So the Yeah. coach will stay on the field. We will decide the style of play and the best coach to implement that play, and we will give him the players. Yeah. So Edu, राहुल सैनियाली उस टाइम पे विनय वेंकटेशम एंड अभी जो आईएक्स से फर्स्ट स्वेन मिस्लिनटैट Yeah. these are the guys who are responsible for collecting the players. Unai Emery is only responsible for coaching the players. Right. ठीक है. Now Unai can work with that model well, but his preference and our preference was very different. Should match. Yeah. Yeah, it was very different. Right now it's Edu and Arteta. They both decide, come together, and then अब board पीछे से चल के अपना काम वाम करके प्लेयर्स को ले आता है, टारगेट 1 टारगेट 2 करके. उनाई कैन वर्क विद दैट मॉडल, बट ही नीड्स दैट सिनर्जी जो उसकी मॉन्ची के साथ आती है. Yeah. मॉन्ची वाज विद हिम एट सेविया. Yeah. मॉन्ची वाज विद, नाउ इज विद हिम एट आई थिंक एस्टन विला में भी है. Yeah. या एस्टन विला में नहीं, पता नहीं कोई है. बट द पॉइंट इज दैट Monchi, they were trying for Monchi though, if I'm not wrong. या आई थिंक सो, या तो मॉन्ची एंड एलिमनी दोनों के लिए ट्राई करे थे. बट द पॉइंट इज दैट he has to have that synergy with the board ताकि उसको जो प्लेयर चाहिए वो ही मिले. He wants Pau Torres, he got Pau Torres. He want Musa Diaby, he got Musa Diaby. He decides कि Leon Bailey will not be a winger anymore, he'll be a wing back or a full back. Fair enough. He knows how to use Ollie Watkins की strengths and everything. Yeah. So he is a very good coach. इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. उसकी यूरोपियन पेडिग्री ही उसके लिए काफ़ी है बताने के लिए. Yeah. Even in that shite team of ours, he still took us to that Europa League final. So he Yeah. is a good coach that made do with Pepe and everything, and fair enough. Um, I feel bad that it didn't work out with him, but it was also time to move on. Some of the football we were playing was absolutely terrible, and we could have played much better considering the players. Yes, it was not the players he wanted, but I don't think any manager gets all the players he wants. Yeah. दैट बीइंग सेड, अगर उसको सेम लेवल ऑफ बैकिंग मिल रही होती जैसे अभी मिल रही है आर्टेटा को, आई थिंक ही वुड हैव सक्सीडेड डेफिनेटली. वुड वी हैव True. वन द लीग? स्टिल नॉट, बट वी डेफिनेटली वुड हैव हैड अ कपल मोर ट्रॉफीज अंडर हिम, Right. मेरे हिसाब से. I agree. कैन I विला agree. फिनिश फोर्थ? This season will be a marathon of who has the better depth. You will need your second string to come through for you and nick those 1-0 2-0 wins, man. Our wins have not been the prettiest. हमने पैलेस को 1-0 हराया है away from home. हमने Yeah. ब्रेंटफोर्ड को कम्युनिटी शील्ड में एमी एमी करके हरा दिया है. Your second string would need to just step up at the right moment and nick you a goal or two. And that's Yeah. all you want, bro. That's all you need. Does Villa have that depth? They've lost Buendia, they've lost Mings. Tielemans abhi injury se वापस आए. First unit is absolutely phenomenal. What happens though later, I can't really say. Right. Again, like I said, it's too early to say which one of us is challenging for the title or if City is losing the title. It's the same for Villa. Let's give the season a couple of, not couple, at least 4-5 more game weeks. Let's see what happens. उसके बाद देखते हैं कि विला का क्या होता है. So yeah, I think squad depth would be the most crucial for Villa, as it will be for Newcastle also. यार उनके काफ़ी मुश्किल fixtures है. अब मेरे हिसाब से they're gonna get a lot easier. I think West Ham में next time का वो मुश्किल है, but उसके बाद Palace and everything, I expect a lot from them to go on this winning streak and shoot up the table बहुत ज़्यादा. Yeah. Yeah. I agree. Villa was a surprise this season for me. I mean, I knew that they could do well, but the way they beat Brighton so convincingly, They Oli recruited really Watkins, well, यार. yeah, They Oli recruited Watkins, really well. really great player. Their recruitment has been really great. I think Monchi is at Aston Villa, so I expected their recruitment to be good, but they are actually doing well this season, right? Last thing before we end the stream, Newcastle, we generally end up focusing a lot of our talks around the traditional top 4, traditional top 6. Newcastle, when we started, like you remember, season preview में भी मैंने कहा था कि शायद Newcastle last season का जो उनका ये था वो शायद मैच नहीं कर पाएगी. I can like eat a humble pie looking at what they are doing this season. Crazy, bro. And of course their fixtures were real like थोड़ा difficult, right? Yeah. पहले 2-3 fixtures were really bad for them. But the way they have bounced back from that, it's really commendable. I haven't watched Newcastle's any game
पूरा का पूरा. Like that, I watched a few games just half time तक. Their first five fixtures were first four fixtures were Villa at home, Yeah, yeah, City away, which they yeah. lost, Liverpool at home, which they lost, We lost. Yeah, Brighton away, which they yeah, lost, yeah, Brentford, which they won, Sheffield they beat 8-0, yeah, EFL कप में सिटी को हरा दिया, बर्नली दे बीट 2-0 एंड yeah, अब उनके फिक्सचर्स हैं वेस्ट हैम, पैलेस, वुल्स, आर्सेनल, बर्नमथ, चेल्सी एंड फिर से यूनाइटेड. तो या yeah, so now it's relatively easy, but first four fixtures में we are talking about top teams. yeah, So yeah. yeah. तो I feel ये जो अगले 4-5 fixtures what you talked about, right? दिसंबर तक, अगर नवंबर तक they manage to beat out of the 6 teams, let's just say 4 teams, Mm, and then suddenly they are up there, right? mm, And then they are fighting with Liverpool for that top 5 position. They are fighting with Tottenham for that top 5 position. mm, Arsenal, I would still say, have a bigger goal right now this season. So I won't talk mm, about top 5 when like top 5 mm, competition when it comes to Arsenal. mm, Then they are fighting with Aston Villa, of mm. course, are gonna be there looking Yep. at how they are playing this season. Yeah. Brighton, they looked like that. I mean, before the season, we thought that Brighton would be up there. This season, I think they have not impressed me as much. Mm, They have looked just a little shaky. In a mm. sense, I don't see them convincingly coming in top 5, right? They have to struggle a lot. My And then prediction is second half of the season Brighton will be the second or third best team in the league. I think right. the second this Beleba guy gets up to speed now. The second Yeah. they have a DM now, look, a good DM. Yes. Yeah. It'll work out. For me at least that's my prediction. Yeah. And I think the modern football is so much reliant on a good DM because you expect Mm, your defenders to come into the game. Otherwise, you expect your right back, fullbacks to be in the game, right? It's so much important for your DM to then perform so well so that the mm, distribution happens so well from the back. Like every team today wants to build from the back, yeah. right? And then your DM is so important. And I saw a really great video that day that I think you only had suggested that game video that why Ange Postecoglou, that why Premier League is a perfect fit for Ange Yeah, Postecoglou yeah, yeah. because T4 वाली uh, video. yeah, because everyone wants to build from the back and they want to press everybody high, and suddenly Tottenham has a press resistant DM there who Yeah, can just turn around and take all 3-4 players who have exactly. pressed you out of the game, right? Mm, But for such high pressing teams, your DM is such an important uh, yeah. factor in that midfield now. Mm, क्योंकि अगर राइस नहीं है, for example, Jorginho, right? The mhm. way he lost the ball against Tottenham. If that's Rice, you probably wouldn't, right? Yeah. So I agree. Having a good DM will probably change the fortunes for Brighton. Mm. But for Newcastle, I feel उनका यूरोपियन फिक्सचर जो है शायद उसका एक इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा आज उनके. they play PSG. Also, or आज not they आज, tomorrow they play PSG. tomorrow they are playing PSG. I think Joshua had put a message saying that Real Madrid scouts are gonna be there at PSG to look at a few players. I think Bruno and somebody else that he mentioned. Hmm. So Newcastle's greatest challenge would be to at least match what they did last season, at least match, Yeah. right? Yeah. And that's where I mean, वो कहते हैं ना कि again ghost of the past. For them, it's really important that जो भी उन्होंने last year potential दिखा है वो ये साल complete कर सके, at least उसके आसपास आ सके. Having said that, I still do feel, I can be totally wrong, that there are teams that will get better of Eddie Howe, and that may not be like the likes of City, Liverpool, Arsenal, but the smaller teams might also get the better of Eddie Howe, is what I feel. Again, I can be totally wrong. You tell me, man. I think just like last 5 minutes we'll talk about like Newcastle and we can then end the stream. Yeah. See, I think if you ask Joshua or any other Newcastle fan, they'll themselves tell you that Champions League probably arrived a season too early. They were probably expecting to be firmly in the Europa League places and then compete for the Europa League.
Yeah. iteratively build करते रहो. Yeah. The Yeah. recruitment's been good. Um, some signings, Gordon, Barnes चलो injure हो गया. Yeah. Really good. Botman, Shar, very stable defenders. Trippier, very shrewd signing. Pope, great keeper. Dan Burn, chalo theek hai. They'll probably need to upgrade on that left back as well. But they've got Tino Livramento also now. They Yeah. also Lewis Hall they bought from Chelsea as well. So they've been making these great signings. But Yeah. वही है. How do they maintain the levels? I think right now Newcastle are sort of वो नहीं होता they're just living in the moment sort of thing, and I'm Yeah. sure Yeah. the club and the manager want to perform as well, but as fans I will say um, they are just living in the moment right now. It's fun to play against PSG, and they will also Of um, course. they'll savor in that moment if they beat them by mighty Newcastle and everything, because right now very few people in that European group would give them any sort of hope ki, of course everyone was saying कि काश न्यूकासल नहीं मिले. I had Madrid fans saying न्यूकासल नहीं मिलनी चाहिए. From a fan's perspective, I think they're enjoying this. From a club perspective, they will take this as a learning experience. And Yeah. I think if they're hovering around fourth, fifth again, which I think they can, like I said, it'll just take a run of if they beat West Ham, if they beat Palace, if they beat the next 3, 4 teams except Arsenal, hopefully, then I think the mood will change again. The mood Yeah. will change. They don't have to play City. They don't have to play Liverpool until a long time. अभी तक काफ़ी टाइम है. ठीक है. सिटी लिवरपूल मेरे हिसाब से न्यूकासल के लिए टफेस्ट फिक्सेस हो सकते हैं. एंड विच इज़ वाई आई थिंक दे विल हैव till Christmas if they are there and by fourth, fifth, solid, done. Another season where Yeah. they'll do it really well. Right. So Yeah. for me, right now, they'll just enjoy the Champions League. They'll Yeah. try to wreck somebody's season or make the surprise entry into that round of 16. Because if they get Yeah. into that round of 16, look, January will be a bloodbath at Newcastle. And I don't Yeah. mean by Khashoggi standards. I mean, they will recruit somebody who can take them to that next level, because once Yeah. they are there. Yeah. And you can see how excited the entire town is, because I think Joshua ne डाला था Twitter पे about their preparation with the drones and everything Yeah. for that fixture against PSG. Bhai, the city is making the most of it, bhai. So this is Yeah. absolutely incredible for I them. Yeah, yeah, I agree. A big club finally gets that chance. I think 90s when they were fighting Mm. for the league, and suddenly they dropped a few times after that. Continuous mismanagement from Mm. their owners, and now they have an owner which Mike actually Ashley, wants their club. God. Yeah, which actually wants their club to Mm-hmm. succeed on the pitch, right? Mm-hmm. And I've been there as a Tottenham fan. Our first season in the Champions League under Harry Redknapp, we were against Inter Milan, Mm. and nobody expected. Inter Milan had come into that season as the winner of Champions League Mm. the previous season, right? Jose Mourinho had won, and we blew them apart, right? If you Mm-hmm. remember that 4-3, and then at home we won against Inter Milan. Suddenly, first season in the Champions League, and we are in the round of 16. We are in the round of 16. Yeah, yeah. We went past round of 16. I think AC Milan we beat, and then in the Mm. quarterfinals we had to face Real Madrid. Mm. Then you are in a dreamland, right? First season Mm. in the Champions League, and then you go on such a great run. Yeah. Unfortunately, we couldn't capitalize on that because our Mm. owners were in a totally different mindset back then. Newcastle's owners are not here to just make up the numbers; they Yeah, are yeah. here to 100%. win everything. Yeah. So if they go on a good run, uh, as a Tottenham fan, I'm scared of them. Hmm. I'm scared of them in a sense that they will then face a lot of problems to teams who are trying to match up to City, Yeah. and then there is suddenly City and Newcastle and Arsenal, and of course Liverpool is always going to be there, and then we have to do so much better in terms of Yeah. recruitment, in terms of on-field Hmm. performances. That's what I'm Yeah. afraid of The Newcastle the for. thing is, Alok, देखो पता है, if they make a good run in the champions, if they somehow make it to the round of 16 and then to the quarters now, Yeah, then it becomes a little dicey for the rest of us, because now we have to compete with these guys when it comes to, of course, जैसे जोशुआ ने कहा ब्रूनो एंड इसाक को देखने आएंगे scouts, yeah, yeah, but the players we are scouting for, चलो कोई कह रहा है हमें मोस्कार्डो आने वाला है. Let's say one of our clubs want, okay, hypothetically, let's say both of our clubs want Neto, and yeah, Newcastle decides कि Almiron को replace करने के लिए we also need Neto.
Yeah. You give Neto a very nice choice between not two clubs who would be in the Champions League, but three now, Yeah. जिन्होंने last season क्वार्टर्स तक पहुंच गई, चैंपियंस लीग तक, एवरीथिंग. सो the deeper they go, the more credible a force they become when it comes to competing with other teams Yeah. for titles and for players and for sponsorships and everything. So as much as, like I said, the town will take it all in, the atmosphere and मजे करेंगे चैंपियंस लीग में, the Yeah. board will be looking at this like the day we go on a deeper run and everything, um we shop from a different level. We go for the best talents in the Yeah. world. जैसे अब not that they are not already doing it with Tonali and everything, but Yeah. who's to say? Let's say we all finish in top four. You, us, Newcastle City, ठीक है, in whatever order. And Yeah. let's say we all want to upgrade our wings, and हम सब लोग उसके लिए जा रहे हैं, राफा लियाओ के लिए. Why would Rafa Leao? Of course, if Newcastle's nowhere there, then Rafa Leao says, okay, Spurs and Arsenal, two teams, both in Champions League, blah blah blah. If Newcastle's there, they have more money than us. Yeah. They are also a better project in the sense that that players will keep coming to that club. Yeah. They will Yeah. keep recruiting. Relentlessness होती है. State ownership कहीं ना कहीं उसका दिखेगा. Yeah. Yeah, like the top players, we will have serious competition when it comes to Right. signing Yeah. all these guys. So yeah, big Yeah. year for Newcastle itself. Yeah, मेरे लिए. Yes, 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 I agree. And Joshua, here, all the best for your Champions League run. I know as a Tottenham fan, I've seen when Hmm. your team plays in the Champions League for the first time, how it feels, and it's a dreamland to be in, right? Uh, so yeah, and it's a. I mean, I'm pretty sure you're gonna enjoy these nights. Yeah, man. So, all right, man. Thank you so much, guys, for still watching. We've been talking for almost 2 hour 15 Wow. minutes now. This was supposed to be a 1 hour stream, and we just ended up talking a lot. And there was one request which I wanted to show you before we leave. Mm. Is that would be great if you both come together every week or a fortnight for a North London show. We'll It's a keep good trying. idea, That's a Yeah, good idea. we'll keep trying something like this. Yeah, it's a good idea. Uh, so yeah, every week probably not, but yeah, fortnightly is something that we can Mm, definitely try, for right? sure. Because I don't know how much can we even talk every week about all of this, but fortnightly meeting like once in Yeah. 15 days and just have a and understanding of what's happening in the league or Mhm. the Champions League would be really great. So thank you so much, guys, who are still here. 65 people are still watching. Please like karo, subscribe karo, South Stand View or A for Arsenal दोनों को 1600 subscribers हो चुके हैं. Thank you so much for being here on this journey, man. I did not expect it to be so high so quickly, Well, you but deserve it, bro. thank you guys. Thank you guys, and we'll see you very soon. And yes, come on, Spurs.